what is the role of address line, we have seen what is the role of data line, how that kitne bit ka processor will matter to me, and then we have seen the features of 886. So let me just revise the features. The features were like it has 20-bit address line, means what, how much memory it can access? 1 MB. Perfect. Then we have seen it has 16-bit ka data line, so it can access 16-bit at a time. 886 is a 16-bit processor, fine. And then later on we have seen it support memory segmentation. What do you mean by memory segmentation? I told yesterday, last lecture. So it has 4 segment memory. It's dividing memory logically, it's not physically. Try to understand. We will see what is the difference is logically into the 4 segment, and memory banking is Bank or even bank. Yeah, it's actually physically dividing the memory in 2 parts. Okay, 5 and 2 KB. very good. So whenever I say the memory banking means what, physically dividing 1 MB of memory in 2 parts, and whenever I say the memory segmentation means what, logically dividing the memory in 4 different segments. Actually not many segments, but 4 different segments, because we'll be using a 4. Fine. So these are the 2 things which you have seen. Then we have seen it supports interrupt. Then it works in 2 different modes. That is a maximum and minimum. Where in maximum, if I say, so it works with another processor, and minimum means what, only one processor will be there. Fine. Then we have seen it supports interrupts and also that features we have seen. Fine. Now today we are going to see the very important part, is the architecture. Okay, you might have studied in your diploma, but I want you to understand each and everything, because architecture is very, 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 very important. Okay, to understand how the things are going inside, how the program is getting executed, how the data is passing from here and there, that everything you must understand. Okay, then only you will just get a feel like yes, I'm understanding it. Okay, so now this is the architecture. What happened? Yeah. So this is the architecture. I hope you can see on your screen. So 886 architecture is basically divided into 2 parts, BIU and EU. Anyone knows what is it BIU and EU are? Yeah, Bus interface unit. Yes, any another one is execution unit. Very good. Okay. Now can anyone tell me what is the function of BIU? Fetches the data. Okay. Yes, some more fetches the data. Fine. Why EU cannot fetch? It is the interaction of the microprocessor with the memory. Okay, fine. Very good. Any other function which you remember? Any other function? Q, 6 bytes of Q. No. Yeah, that is. But I want BIU ka functions. I am not asking for BIU ka parts. Kya kya? Function. First one you said correctly. It actually fetches the data. It interfaces with the memory. Fine. Something more? Sir, it connects microprocessor with peripherals. Perfect. Okay, it connects microprocessor. What do you mean by peripheral? What do you understand from this word, peripheral? Yes. Sir, other devices, input-output devices. Whatever we connect to the microprocessor, now if I do any let's suppose assembly or a project, okay? So 886 छोड़ के जो भी बाकी करेगा सबको peripheral बोलते हैं. Simple. Just keep the things simple. Okay. So whatever we interface with the 886, whatever we connect to the 886, they are all called as peripherals. Okay. Now we will see. Let's see over here. यार रोज के दिन में पेन नहीं चल रहा है. ये बहुत ट्रबल करता है छोटा मोटा चीज. I don't like it. Okay, let's start now. Fine. So 4 June. Okay, so we are saying 886 ka architecture. So this is very important from concept point of view as well as
for understanding how the instructions and everything flows. Okay, so let's start. So BIU, so architecture is actually divided into two parts, BIU and EU. Fine. If you want to remember that architecture is very simple, I do just remember like this. It divided into two parts, BIU and EU. Okay. In BIU we do have two buildings. यहाँ पे एक building है, यहाँ पे एक building है. Okay. Here it is of 5 floor. Here it is of 6 floor. Fine. Here the 5 floors are like all the segment register. There is a core segment, SAC segment, data segment, extra segment, and one more there is a IP. That is the instruction point. This is the way I remember. I'm just telling to you. Okay. On the right hand side we are having another building which is of 6 floor. So you just go from 1 to 6. Ulta. But it goes like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Keep in mind UP में हर एक चीज के लिए reason है. Getting it? Why this numbering is also ulta? There is also a reason for that. Okay, fine. Then later on, come to this EU section. So EU may once again we are having one building over here, which is of 8 floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of that, first 4 floor are divided. Getting so first 4 floor are divided, and next 4 are like intact. Okay. So first 4 things we are having. There's a ABCD. ABCD. We're having higher, lower, higher, lower, higher, lower. Okay. Then we are having all the offset address registers. There's a stack pointer, base pointer. Then source index and destination index, SP, BP, SI and DI. Okay, so these 4 are there. And in right hand side of this EU, we are having CAO. CAO, that is a control unit, ALU and Operandic Flag. Okay, so if I just make it, if I just draw that architecture is simple. Once again, just repeat, just revise with me. This architecture divided into 2 parts. Upar BIU है, नीचे EU है. Okay. Then here we are having one building, here another building. Okay. Here we are having 5 floor, here we are having 6 floor. Getting the floors are like CS, ES, SS, DS, and IP. Fine. Here the number is like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Then it goes like this one. Here once again we are having 8 floors. ऊपर का first floor 4 floor divided है जो ABCD है. So ABCD higher, lower, higher, lower, higher, lower. Then SP, BP, SID, this index registers are there, or you may say the offset register. Then here we are having control unit. Then here we are having ALU, and then here we are having operand flag. Fine. Then उसके बाद यहाँ पे addition का एक symbol है, इधर से बाहर जाने का memory interfacing. That's it. That is all the architecture is. Okay. I hope the blocks are clear to you. Once again, just try to memorize, just try to visualize the picture. Okay. Architecture divided into 2 parts. ठीक है. ऊपर वाले पार्ट का नाम है BIU, नीचे वाला पार्ट EU. ठीक है. BIU में left hand side में we are having one building which is of 5 floor, which consists of all the segment register. So core segment, extra segment, data segment, stack segment, and with that we are having one more offset address register which is the IP. Fine. Then to the right hand side we are having one more building which is called as instruction stream byte queue, which is of 6th floor. Numbering is ulta from bottom 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to the top. Okay. Then just come down. We are having EU, that is execution unit, which is of 8 floor, that is my way, 8 floor. So first floor are 4 floor are divided like ABCD, then higher, lower, higher, lower, higher, lower. Then we are having that 4 offset address register. There is SP, BP, SI, and DA. That's it. And on the other side we are having control unit, then ALU, and then operator. That's it. Okay, that is all regarding the architecture ka diagram is. Okay, now try to understand. Now here the actual pictures start, actual understanding start. Now, what is the use of BIU is that, first of all, we just say it is actually used to interface MUP with outside world. Are you getting it? So very first function of BIU is that it is actually used to interface MUP with the outside world. If MUP want to talk with any other thing in the world, yes, it has to go from BIU. Okay, that's why in diagram you can see over here that here it is to memory and input and output. This was the interfacing, okay, which is going outside. ये जो dotted line say that is what 86, and ये जो भी blue part में इधर, that is outside the thing, outside the 86. Okay, now that whenever we say that outside word of 86, now what comes in outside word? What comes in outside word? What is there in outside word to the MUP? The IO devices. Okay, IO and memory.
Very good. Okay. So whatever the devices are which we can interface with the MUPI, that can be classified into two categories, that is IO devices and memory. खत्म. इसके बाहर कुछ नहीं है उसकी दुनिया. बस इतना ही वर्ड है इसके लिए. Getting it? Okay. So what are the MUPIs? Okay. So to the MUPI, whatever you can connect to that MUPI, it can be classified either IO devices or memory devices. Okay. So to the MUPI, this is the word, bus IO device and memory device. Khatam. Okay. And whenever MUPI want to talk with any of the IO devices or the memory, whenever MUPI want to talk with IO or a memory devices, yes, it has to go through BIO. Okay. So BIO will facilitate that. कि आगे तुझे communicate करना है. Okay, रुक. I will just make a way for it. Are you getting it? Okay. So to interface with the outside world, to interact with the outside world, BIO will help. That is the first thing. Okay. Second most important thing is that now it just like it actually generates a physical address. अब ये समझो छोटा मोटा चीज है but बहुत important है. ठीक है. It generates a physical address which is of 20 bit. It generates a physical address which is of 20 bit. ठीक है. अभी ये चीज क्या है? Because now as we have seen we are having MUPI. Keep in mind memory वगैरह जो भी है सब outside रहता है, as we have seen in a basics of microprocessor and the controller कि MUPI में सिर्फ MUPI है, बाकी जो भी memory है IO device जो भी है we have to just attach it from external. ठीक है. So MUPI is outside, sorry, memory is outside. ठीक है. Now the memory which we have interface is of 1 MB, and to interface, or you may say that to interact with the 1 MB of memory we require 20 bit address. समझो, try to understand what I'm saying. To interact with the this 1 MB of memory we require total 20 bit का एड्रेस. अभी एड्रेस का कैसा फंड है? आई वांट द फुल एड्रेस. मतलब ऐसा नहीं कि हाँ एड्रेस में थोड़ा बहुत देखा तो चलेगा. नो, इफ यू वांट टू रीच टू सम पर्टिकुलर लोकेशन, यस यू नीड टू हैव दैट परफेक्ट एड्रेस, फुल एड्रेस. ठीक है. तो अगर लेट्स सपोज एड्रेस 20 बिट का है, लेट्स सपोज मैं बोला चल डायरेक्ट 16 बिट दे दे, नहीं चलेगा. ठीक है. बिकॉज़ एड्रेस हैज टू बी परफेक्ट एंड एवरीथिंग मस्ट बी देयर. ठीक है. सो now if I want to access this memory, we have seen if it is a 1 MB of memory, the address required for it is a 20 bit. अभी प्रॉब्लम कैसे? Why we just call this particular as a function of BIO to generate a physical address of 20 bit? Because now whatever the register we have, अच्छा, what do you mean by register? What are the registers? What is the function of register? Flip flop. Okay, they are actually a flip flop, but what is the use of them? Why do we use them? Registers. That we will flags दिखा सकते हैं. ठीक है, flag होता है to perform ALU operations. Okay, they are mainly used for storing something. They are just storing it. Registers are storing it. Whenever I say flip flop चीज क्या है? Single bit storing unit ना? Getting it? Flip flop is what? They are single bit storing unit. ठीक है. So mainly means what? Registers are basically storing unit. ठीक है. Now अभी problem कैसे? Problem नहीं बोल सकता मैं. How the architecture has been designed that whatever the registers we are having, whatever register having, that maximum size of register is a 16 bit. इसके ऊपर एक भी register नहीं. अभी समझो क्या कर रहा हूँ. ठीक है. Maximum size of the register is a 16 bit. उसके ऊपर एक भी register नहीं. We are going to see that registers which are there, that ES, CS जो भी है, सब देखने वाले हैं. ठीक है. But just take my word for the right now, that is all the registers जो भी है registers, उसका maximum size 16 bit है. उसके ऊपर एक भी नहीं है. Okay. Now the thing is that whenever I want to go outside means mainly in a memory. When I want to go to the memory, okay, what are the address we require is of 20 bit. अब प्रॉब्लम कैसा है? एक भी बंदा कैपेबल नहीं है कि 20 बिट का एड्रेस एट अ टाइम दे दे. समझो, एक भी बंदा कैपेबल नहीं है कि 20 बिट का एड्रेस एट अ टाइम दे दे. ठीक है. दैट्स व्हाई अभी जुगाड़ कैसे करते हैं, हाउ दैट BIO वर्क्स, बिकॉज़ इफ यू वांट टू गो आउटसाइड, इफ यू वांट टू गो टू द मेमोरी, यस यू नीड टू हैव द 20 बिट का एड्रेस. पूरा चाहिए. इफ आई जस्ट गिव द हाफ एड्रेस, वो पार्सल किधर भी नहीं पहुंचेगा. ठीक है. We cannot go to the destination. So that's why there is a duty of BIO to make that 20 bit का एड्रेस. वो कैसे बनाता है? Try to understand. This is very important in the MUPI aspect point of view. Let me just insert a page. Have anyone started recording? Yeah, someone else started. I don't know who started the recording. Yes, who has started the recording? Sir. Acha, do this for me every time because I will forget. ठीक है. If you want Okay, to sir. questions, you do it, because यार मुझे याद नहीं रहता कुछ, मतलब मैं बहुत ब्लॉकड पर्सन हूँ. ठीक है. So you just take care of that. Yeah, let's see. Now to the 20 bit address. अब ये चीज क्या है? Now the addresses which we normally came across in 8086, they are just called as
फिजिकल एड्रेस, ऐसे सब नाम आएंगे, बेस एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस. ठीक है, so these are the three addresses which we are going to see in this 886. ठीक है, अभी now physical address means what? The address which we actually require to go outside the MUP, that is of 20 bit. ठीक है, physical address मतलब physically what we require to go to the particular location in a memory, that is a physical address and which is of 20 bit, which has to be of 20 bit, otherwise we cannot access the memory. ठीक है, likewise अभी this is of 20 bit. Now the addresses which are there inside a MUP, not addresses, the value which value of the addresses which are stored inside a MUP, they are like this address and the offset address, and they are of 16 bit. समझो, they are of 16 bit. Getting it? ठीक है. Now as we have seen that all the registers whichever there in 886, maximum size of register is a 16 bit, and if you want to go outside, if you want to go outside the MUP, BIU has to generate a 20 bit का address. अब वो जुगाड़ कैसे करता है? It's just like this one. Try to understand. A physical address which I want to be of 20 bit. So how it calculate is equal to, it just do like this, base address I will just like a BA, you just understand. Okay, it will just multiply by the 10 which is in hexa, plus it will do that offset address plus offset address. Okay, so this is the formula, this is the circuitry which is there inbuilt in the BIU. Are you getting it? Okay, so BIU is actually going to do this particular function. Getting it? Okay, so it will generate a physical address of 20 bit. Kaisa, it's just like it will use a base address which is of 16 bit. It will multiply by the 10 and it will add another offset address which is of 16 bit. And because of this, whatever address will get generated, that is going to be of 20 bit. Are you getting it? Okay, so can you just explain me how it is possible if I'm adding 16 bit plus 16 bit? Getting it? Will it give me the address of 20 bit or 32 bit? What do you think? क्या बोलते हो? 16 और 69 तो 16 कितना बिट का है? मतलब just logically thinking, if I just add 16 bit to 16 bit, कितने बिट का आंसर आएगा? 16 बिट का ना, most probably. ठीक है, अभी कैसे, अभी देखो ये BIU कैसे काम करता है, BIU कैसे काम करता है. That's why it is multiplied by 10 over here. ठीक है, and 10 this is in hexa. ठीक है, अभी समझो, let me just give you some example, try to understand. ठीक है, let's suppose मेरा base address है, try to understand 2000. ठीक है, 2000H this particular address कितने बिट का है? 2000H this particular address कैसा बोला? How do you say that confirmly कि 16 bit का? Sir, one digit of hexa is 4 bits of binary. Perfect. ठीक है, perfect. मतलब yes, you are somewhat knowing with the concept. I'm happy. ठीक है, so whenever I say 2000, now let's suppose if I just say 2134, 2124, कितने बिट का है? 16 bit का. Yeah, actually you can't say. Why? Because I have not said octal or hexa or binary जो भी है. ठीक है, if I say octal तो, if I say octal over here तो, if I say octal, sorry, 12. Perfect. You are understanding it. You are understanding what you mean by 16 bit, because मध्य लोग सिर्फ बोलते हैं तो उनको फील नहीं होता 16 bit मतलब होता क्या है. ठीक है, so whenever I said 2000H means was this 2 consists of 0010, this 0 consists of 000 and likewise. ठीक है, so that's why it actually becomes a 16 bit address. Getting? Now let's suppose my base address of 2000, and let's suppose if I consider one other which is of 16 bit, as we can see over here. ठीक है, and let's suppose I take another offset address of 1234, let's suppose, which is once again, if I write H तो once again 16 bit का होता है. Now how does this BIU generate 20 bit का physical address? अभी ये ऐसे base address and offset address में divide क्यों किया? Because we cannot have 20 bit का address together. We cannot store 20 bit का address मतलब 20 bit जो भी number है. Let's suppose if I just say 54321H, ये कितने bit का number है? 54321H 20 bit का. ठीक है, we cannot store this 20 bit at a time. That is what the limitation. Why? Because what are the register means, what are the what you can say that storing element we are having, that is maximum capacity is 16 bit, उसके ऊपर नहीं जा सकता. तो BIU बोलता है ठीक है, चल अपन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे. ठीक है, now the जुगाड़ is like this one, that now it will just say कि अब ये जो 20 bit का एड्रेस है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का. अब ये कैसे समझाता हूं मैं आपको, कैसे डिवाइड करते हैं. दो पार्ट में डिवाइड कर. ठीक है, दो 16 पार्ट में. देख 20 बिट का एड्रेस मुझे दो 16 बिट के पार्ट में डिवाइड करते हैं. 20 बिट का एड्रेस में दो 16 बिट के पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, और उसके बाद में कंबाइन करेंगे, देन वी विल गेट अ 20 बिट. कैसा? नाउ दिस इज द बेस एड्रेस व्हिच इज ऑफ 2000 and so offset address which is of 1234H. Now both are a 16 bit. Now how does it generate the physical address? Is physical address is equal to base address into 10. So base address is 2000 into 10. Everything is in hexa. Just try to understand. If I just forget to write H,
ठीक है, plus offset address which is 1 2 3 4. So if I just do this calculation, so 2000 into 10 becomes 20,000 h and plus 1 2 3 4. This is going to be either 2 1 2 3 4. Getting it? 2 1 2 3 4. And now if I just look at this particular number, then yes, this is of what? कितने bit का है? 2 1 2 3 4. 20. 20 bit. Are you getting it? So this is how that BIU generates a 20 bit का address. ठीक है? So it will take one base address, it will take one offset address, then it will just multiply base address by 10, it will just add that offset address, and now because of that, what other address will be generated? That is called the physical address, which is of 20 bit. Are you getting it? Okay, so have you understood why do we need to? Yes. So where does this this addition on whatever this happens? Very good, very good, very good. I will tell you each and everything. जितना doubt है ना आपको बिंदास पूछो, जितना भी doubt आपके दिमाग में आएगा. Because I will try to give all the knowledge which I have, but sometimes ऐसे हो सकता है कि मुझे याद नहीं आया कि अरे यार ये भी doubt हो सकता है. So whatever doubt you have, बिंदास पूछो. ठीक है, I will tell you whether everything is takes place. ठीक है, yeah. So this is how that address will be stored and this is how we will be getting. ठीक है, now you tell me if I want to reach to this particular address. I will come to that point. Don't worry. Okay, if I want to just get to or reach to this particular address 54321. ठीक है, 54321. तो ये address MUP के अंदर कैसे store होना चाहिए दो पार्ट में? Can anyone tell me? I want to reach to this 54321. तो जैसे अपने दो पार्ट में डिवाइड किया, बेस एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस. Okay, so how to divide this address into 16-bit parts so that whenever I combine by using this formula, I will be getting 54321 back. Divide by? Yes. ये नंबर को मुझे डिवाइड करना दो पार्ट में, मतलब like this 2 1 2 3 4. Let's suppose if you have to reach this particular location, then I want to give the I want to store the two numbers like 2000 and 1 2 3 4 in a MUP. ठीक है, जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा मुझे ये पर्टिकुलर लोकेशन मिलेगा. अब मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, अब मेरे को ये लोकेशन पे जाना है. I want to go to this location. Then what two numbers to be present in that MUP as a base address and the offset address, so that whenever I apply this particular formula, I will be getting 54321 back. Have you understood? अब मैं उल्टा जा रहा हूँ. Yeah. Come on, anyone? So 5,000 will be base address. Okay. And 4321 will be offset address. Perfect. Okay, so this is how we have to store this address if you have to go to this particular location. Why? Because once again, if I just multiply by 10, 50,000 plus 4321, 54321. Are you getting it? So this is how it will be generating a physical address. Okay, तो अपने को दोनों पता होना चाहिए. If I'm having base address and offset address, then how to get the physical address? If I'm having a physical address, then how to get base address and the offset address? Are you getting it? समझ में आ रहा है? ठीक है, so this is how that BIU will generate a 20 bit का physical address. And yes, this is the task of BIU because अपने पास कुछ भी 20 bit का register available नहीं है. So BIU has to do all this thing and that everything takes place in ये वाला मोड. That's why ये arithmetic module दिखा है. समझ में आ रहा है? ये जो भी दिखा रहा है इसका मीनिंग क्या होता है समझो. each and everything try to understand. ठीक है, इधर से base address आएगा, इधर से offset address आएगा, दोनों का multiplication होगा and addition होगा and that now it is ready for going outside. Are you getting? Now it is ready to go outside and it will just go to the memory or wherever it wants. Understood? ठीक है, तो यहाँ से बेस एड्रेस आएगा, यहाँ से ऑफसेट एड्रेस आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ये जो भी समेशन मतलब क्या, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा. Segment address into 10 plus offset address. That base address is also called as a segment address. Just make a note of it. Getting? Because some books use a base address, some books use a segment address. So do not get confused. One and the same thing. ठीक है, so that operation takes place over here. यहाँ पे एक arithmetic module जो दिखा है अपन यहाँ पे होता है वो. ठीक है, and after that it is ready to go outside. Have you understood the BIU? Any doubt? Sir, वो into 10 कहाँ पे होता है? ये मतलब that's why this arithmetic मतलब this is ये एक ALU जैसे होता है, arithmetic and logical operation जैसे. ठीक है, you can see one more thing मतलब if I just tell you ALU का shape है उसका shape देखो same ही है. अभी के लिए बाकी सब everything in box but ALU का shape ऐसा है and उसका shape समझो. try to understand मतलब हर एक वो बॉक्स में क्यों दिखा है, ऐसे अलग क्यों दिखा है, उसके पीछे भी रीजंस है एक्चुअली. ठीक है, but you can see over here. So यहाँ पे मतलब that arithmetic operations takes place over here. Getting it? ठीक है, तो मतलब अभी this act like ALU मतलब ALU का जैसे ही काम करेगा तो मल्टीप्लिकेशन जैसे अपने ALU ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह काम करेगा जितना वैसे ये करेगा. बट यहाँ पे मल्टीप्लायर फिक्स है 10 खत्म.
यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. That is what the difference in this particular unit and this particular unit. Getting it? ठीक है. So यहाँ पे it has only one work 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करने का. कैसा? बेस एड्रेस ले, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर, उसमें ऑफसेट एड्रेस ऐड कर, खत्म. Getting it? That is what is the function of this. मतलब this particular part is restricted to do this particular functionality, not any other else. Getting it? ठीक है. And बाद में वो बाहर जाएगा. Fine. So this is what the BIU functions. I hope you have understood. Now there are some more functions, but basically these are the two. That first one, it is actually used to interface MUPI with the outside world. अगर बाहर किधर भी बात करने का BIU के थ्रू जा. Second thing, it is responsible for generating 20 bit का physical address. That is very important. How does it generate? That physical address which is of 20 bit is equal to base address which is of 16 bit into 10 plus offset address once again which is of 16 bit. ठीक है. You can just give the example and that's it. You can just find it in notes. ठीक है. Then there are some more functions or some more things which we just say regarding the BIU. That is, it actually used to fetch information from the or fetch data from memory. ये एक्स्ट्रा ऐड करने का भी अब इजी है. इट इज यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम अ मेमोरी. इट इज यूज्ड टू फेच इंस्ट्रक्शन आल्सो फ्रॉम अ मेमोरी. ये दोनों भी बोले बिकॉज़ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एक्चुअली अलग आंसर नहीं बोल सकता, बट यस यू हैव टू से कि मतलब इट जस्ट लाइक इट फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी. इट आल्सो फेचेस डेटा फ्रॉम अ मेमोरी एज वेल एज इज राइट डेटा बैक टू द मेमोरी. ठीक है. बिकॉज एज आई सेड कि इट इज एक्चुअली यूज्ड टू इंटरफेस द MUPI विद द आउटसाइड वर्ल्ड. अगर आप बाहर कुछ भी बात करना है इसके थ्रू ही करना है तो खत्म. तो मेमोरी में अगर कुछ रीड करना है तो भी इससे होगा, मेमोरी में कुछ राइट करना है तो भी इससे ही होगा. आर यू गेटिंग इट? बाहर काम करना है मतलब क्या करना है, कुछ तो डेटा ही रखना है ना. एक तो IO डिवाइसेस नहीं तो फिर मेमोरी में और कुछ तो डेटा लेना है, खत्म. ठीक है. सो व्हेनेवर यू वांट टू प्लेस समथिंग आउटसाइड इन IO और अ मेमोरी, yes you have to go to the BIU or you have to something fetch something from the outside. मतलब कुछ डेटा उठाने का. fetch मतलब उठाने, copy paste from outside world or wherever. Fetch is a MUPI का term. ठीक है. So whenever you want to get the data from the outside world, yes it has to come from BIU only. ठीक है. So you can say once again BIU responsible for generating 20 bit physical address. Then another, it is actually used to interface the MUPI with the outside world. Then it fetches instruction from the memory, it fetches data from the memory, it writes data back to the memory. Getting it? Okay. So these are main functions of the BIU. Fine. Then we will see, guys, wherever you feel like a doubt है तो पूछो. I'm just going थोड़ा सा स्पीड में, मुझे आज आर्किटेक्चर पॉसिबल हो तो खत्म करना है. ठीक है. या देन we will see this one, base address, this registers, base address register, ये वाले base address and one IP register. ठीक है. अब ये चीज क्या है समझो, this CS, SS, DS, ES and IP. अब ये क्या चीज है, this particular building. Let me insert a page. अरे और इंसर्ट होगा, उल्टा काम कर रहा है. ठीक है. Third page. Yeah. Okay. Now we will see regarding this particular building, this particular registers: code segment register, data segment register, extra segment register, stack segment register, and IP. Okay. Now, as I told, these are the registers. Okay, and this each register is of 16 bit. This each register of 16 bit. A bit try to understand, clear the concept properly. Okay, these are the 16 bit का register. Getting it? Now, anyone knows what is the function of this particular registers? Yes, ES, SS, DS, इनका काम क्या है? Anyone want to try? Yes. Sir, SS is used during interrupt. SS interrupt. ठीक है. Is used during. Okay. SS, I am talking regarding this SS register. अच्छा ठीक है. Try to understand what is the use of this particular register, because guys, these are the basic things that you must know. Ready? These all are the base address. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. These all are the base address register. These are the base address register. What is the function of each of them? What is the function of each register is that they are actually used to store the base address of each and every segment. Once again, try to understand what I said. Okay, they are actually used to store the base address of each and every segment. Try to understand. These are the segment registers. Okay, these are not actually the segment. These are the segment register. Okay, segment register is a different and segment is a different. What do you mean by segment? Segment is what there. It is there in actually memory. ठीक है. ये अपना 1 MB का मेमोरी जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड रहेगा. ठीक है. इन दैट विल बी हैविंग अ कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट,
extra segment and the stack segment. These segments will be there in memory. I'm talking this regarding the memory, and these are the registers. Try to understand this CS and this CS is the different. Okay, this is what I'm talking regarding the memory, and this is what I'm talking regarding the MUPICA part, MUPICA BIU part. This may be having these registers. Okay, these are the memory segment of the memory का part है ये, memory का एक part है, ये एक memory का part है, ये एक memory का part है, ये memory का part है. ठीक है, but these are what? These are just a register, CS, DS, ES, SS. ठीक है, which whenever I talk regarding the MUP or the MUP के अंदर BIU का part होता है. ठीक है, अब इनका काम क्या है? Keep in mind, these are not segment. बच्चों लोग का confusion रहता है. Core segment किधर है? MUP के अंदर. अरे core segment MUP के अंदर आ कैसे सकता है? कोर सेगमेंट मतलब क्या? म्यूपी का मतलब मेमोरी का पार्ट है, एंड मेमोरी खुद म्यूपी में नहीं है, तो कोर सेगमेंट कैसे आ गया अंदर? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, कीप इन माइंड वंस अगेन, डू नॉट फॉरगेट दैट फंडा. व्हेनेवर आई से म्यूपी मतलब व्हाट, जो भी है सब एक्सटर्नल है, मतलब मेमोरी एंड ऑडियो जो भी है दैट इज व्हाट इज एक्सटर्नल. वी हैव टू इंटरफेस इट. ठीक है, मेमोरी इज नॉट इनसाइड. मींस व्हाट, इफ आई से दिस CS, इट इज नॉट अ कोर सेगमेंट, इट्स अ कोर सेगमेंट रजिस्टर व्हिच फंक्शन इज टू होल्ड द बेस एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर सेगमेंट. ठीक है, ये कोर सेगमेंट मेमोरी में कहां से चालू होता है? बेस एड्रेस मींस फ्रॉम वेयर इट बिगिंस. Are you getting it? Okay, so base address means from where it begins, and that particular base address will be stored inside a CS, which is going to be of 16 bit. ठीक है, अब देखो समझो मतलब कैसे. let's suppose ये मेमोरी है. ठीक है, I will draw it once again if you want. ठीक है, we have seen memory actually range from 00000 to FFFF. This is what the address range. To store the base address मतलब क्या, वो समझा रहा हूं मैं अभी. ठीक है, so this is what the memory which is ranging from 00 to FFFF. Okay, and here we are having different segment. That memory is logically divided into different segment. So here we are having that core segment, data segment, extra segment likewise. And let's suppose now this core segment is starting at 20,000, because that address is going to be about 20 bit, so it won't be of 16 bit in memory. This is memory. Okay, now what is the use of this particular CS register is, this is the CS register I'm talking about, which is in MUP, which is in BIU का part, which is जो 5 floor का building है वो. That is what we are seeing. अभी इसका काम क्या है? इट इज एक्चुअली यूज्ड टू स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ CS. मतलब कोर सेगमेंट मेमोरी में स्टार्ट कहां से हो रहा है? ठीक है, सो इफ इट स्टार्टिंग फ्रॉम द 20,000, इट विल स्टोर दिस 2,000 इनटू दिस वन. व्हाई 2,000? बिकॉज़ दो इट इज ऑफ 20 bit physical address, but here we can store only 16 bit. That's why here we will be storing a 2,000. And why do we store 2,000 only? Because that is what is the normal practice, that each segment will start with some whole number like 1,000. This is not compulsory, but this is what the normal practice. 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 likewise उधर से ही चालू होगा. ठीक है, so that we can use the maximum segment. That is what is been preferred. Getting it? ठीक है, so out of this one I will just store this 20,000, and if you want to have the actual physical address, then I will just multiply by the 10. That is what is the BIU is doing. It multiply the base address by the 20. तो जो भी मिलेगा 20,000 मिलेगा, and 20,000 मतलब क्या, इसका बेस एड्रेस हो गया. ठीक है, बेस एड्रेस मतलब क्या, वो पर्टिकुलर सेगमेंट मेमोरी में कहां से स्टार्ट होता है. That is what is the base address. Getting it? Okay, so that is what is the use of this CS. So CS is actually, you can say like this. So if you have to say that, you can say that CS is the core segment register. That is important. CS is the core segment register which is of 16 bit and which is used to store base address of core segment. Core segment I am talking about the memory. It is actually used to store the base address of core segment. Okay, so let's suppose if my CS ka content is 2,000, it does means what, that if it is a 2,000 means what, my core segment in memory is starting at 20,000 location. How? We have to just multiply by the 10. Getting it? Likewise, likewise that all the register goes. Like data segment. So what is the function of data segment? Once again, the data segment register which is of 16 bit, and its function is to store the base address of DS. There is a data segment. Let's suppose start from a 30,000. So we'll be storing 3,000 in a DS. Getting it? So 3,000 into 10, yeah, it will give the base address from where that actual data segment begin in memory. Getting it? Likewise, we are having ES and SS. So this is what the function of this particular register. So these are the base address. That's why they are called the base address register. They are actually used to give base address of respective segment in a memory. Okay, so code segment register is actually used to give the base address of code segment. Likewise, everything. Likewise, SS also. So SS is actually used to give the base address of stack segment in a memory. Are you getting it? Okay, and how do we get? इसमें 16 bit store होगा. If you want to have the actual physical address of this particular base address, multiply just by the 10. That's it. It will go to that location. Getting it? So that is all what regarding this particular register. Okay. Now one more. We are having one more register which is called the IP. One more register which is called the IP. But IP is not
a base address register. It is an offset address register. Try to understand. Okay, this all four, they are of base address. They are actually used to store that base address, but this one is an offset address register. Okay, and it is actually used to store the offset address of the code segment. Try to understand. To access each and every segment or each and every location, we require two addresses, एक base address, एक offset address. ठीक है, we have seen कि हर एक सेगमेंट का बेस एड्रेस कौन देगा, CS, DS, ES, SS. ठीक है, likewise to access that entire segment or to that particular memory thing, we require two addresses, base address and offset address. We have seen हर एक का बेस एड्रेस क्या है, अब we will see हर एक का offset address क्या है. तो अभी CS का, this particular CS segment का which is in memory, to access this particular memory we require two registers, base address and the offset address. तो इसका बेस एड्रेस है CS, कोड सेगमेंट रजिस्टर का, सॉरी कोड सेगमेंट मेमोरी का, और कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस इज अ CS और CS रजिस्टर, और इसका ऑफसेट एड्रेस है IP. ठीक है, एंड कंबाइन बाय यूजिंग कंबाइन दिस टू CS एंड IP वी कैन मूव एनीवेयर इनसाइड दिस कोड सेगमेंट. वी कैन जस्ट मूव एनीवेयर इनसाइड दिस कोड सेगमेंट. वो मेमोरी में किधर भी घूम सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो नाउ इट जस्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IP इज लाइक दिस वन. If you want to reach to the any location in a code segment, if you have to access or if you have to reach to the any location in a code segment which is the memory, then we have to use a CS and IP. Okay, so CS will be multiplied by the 10, IP will be added, and that will be the physical address to reach inside a code segment. Why? Because we have seen physical address ka formula ka base address into 10 plus offset address. Now for the code segment, base address will be given by code segment register and the offset address will be given by the IP. So that's why here I'm replacing base address by the CS and the offset address by the IP. So base address into 10 plus offset address. Okay, and combinedly we will get 20 bit ka actual physical address where we want to go. Okay, so let's suppose my CS ka content is 2000 and my IP ka content is 4567. Okay, now the location where I want to reach is going to be 20,000 because 2000 into 10 plus 4567 means what? It will give that actual physical address 24567H. Getting it? Okay, so that code segment register and the IP, by using these two we can access that entire code segment. ठीक है, अब ये कोड सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है 20,000 से और एंड एक्चुअली यहाँ पे होता है, वो भी क्यों होता है आपको बाद में समझेगा. ठीक है, एंड इफ यू टू एक्सेस एनी लोकेशन इन बिटवीन दिस वन, देन यू हैव टू यूज द टू रजिस्टर, एक तो बेस एड्रेस एंड देन यू हैव टू यूज ऑफसेट एड्रेस. बेस एड्रेस बोलेगा वो चालू किधर से होता है और ऑफसेट एड्रेस बोलेगा वो उधर घूमने का किधर है, ये पूरे रेंज में. समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ बेस एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस. सो कीप इन माइंड, टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन और एनी सेगमेंट or anything inside a memory, you require two address or require two things, that's the base address and offset address. So base address will be given by someone and offset address will be given by another register. दोनों को combine करके we can reach to that particular segment. Getting it? Okay, so now this particular IP is what offset address register, which is there inside a BIU. It is there inside a BIU. It is actually there along with this segment registers. Okay, so is there along with this and which is actually used to access the code segment. Okay, have you understood regarding this one? Any doubt? Any doubt regarding ये वाला part? ये वाला part, ये जो अपना बिल्डिंग है ना, अरे ये क्या हुआ, या ये वाला पार्ट, ये बिल्डिंग में. एनी डाउट टू एनीवन? सर मेमोरी कितने इसमें डिवाइडेड है? ये जो सेगमेंट जो 4 है, हाँ 1 MB का जो भी है वो कैसे डिवाइड होता है? हाँ, अभी वो अपन सेगमेंटेशन में देखेंगे. एक्चुअली ईच सेगमेंट का साइज 64 किलोबाइट होता है. तो 1 MB को मुझे 64 किलोबाइट में डिवाइड करते जाना है. ठीक है, सो 64 किलोबाइट से डिवाइड करते करते जाना है एंड खत्म. सो वी हैव अ डिवीजन एंड उसके बाद एक को कोड सेगमेंट बोलना है, दूसरे को डेटा सेगमेंट, तीसरे को स्टैक सेगमेंट एंड लाइकवाइज. ठीक है सर, तो उसमें आईपी इंक्लूड होता है कि नहीं? इसमें आईपी इज डिफरेंट वो मेमोरी में. कीप इन माइंड CS एंड IP ये तो BIU का पार्ट है, ये दोनों मतलब हेल्प करेंगे कि मेमोरी एक्सेस करने के लिए. गेटिंग इट? एंड इफ यू टू गो टू द कोड सेगमेंट का कौन सा भी लोकेशन तो CS एंड IP दोनों मांगते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग? ठीक है, अदरवाइज लेट मी जस्ट यूज द पिक्चर, आपको बाद में समझेगा. यार पेज किधर इंसर्ट करूं, किधर जाता है, टॉप में ही जाता है पेज. ठीक है चलेगा. आई विल जस्ट गिव द आइडिया. It is like this one. I will tell you right here only. 4. ठीक है, let's suppose
if you have to access any memory, memory means memory के जो parts है, memory segment, ठीक है, कौन सा core segment, data segment, extra segment and stack segment, ठीक है. These are what that CSDS, these are the part of memory. Yeah, I'm talking about these are the part of memory. Okay, and here you are having that offset base address and offset address. So keep in mind, to access any of the segment or any of the memory segment I'm talking, ठीक है, you require two register, base address and offset address. So likewise, अगर मुझे core segment access करना है तो उसके लिए दो register है, core segment and IP. ठीक है, if you access the data segment we will see later on, but चलो अभी आइडिया देता हूं मैं. इसके लिए इसको एक्सेस करने के दो 1 second segment registers, there is a base address DS देगा and offset address SI देगा. If you want to deal with the ES, then base address extra segment register देगा and DI offset address देगा. If you want to write likewise, if you deal with this one, तो SS base address देगा, BP और SP offset address देगा. ठीक है, so means what, if you have to access any memory, any part of the memory, मतलब any segment of the memory I will say rather, ठीक है, because अपना memory तो ये 4 segment में डिवाइड रहेगा, तो अपने को इस चारों में से ही काम है. ठीक है, so now if you have to access any of this particular memory which is there in any of the part of the memory in actual memory, then you need to have the two register. ठीक है, और you need to have two addresses, एक base address and एक offset address. अगर तुझे now this is the pair which is the fix, अगर core segment access करना है, अगर इसके अंदर जाना है तो इन दोनों के साथ जा. ठीक है, अगर डेटा सेगमेंट में घूमना है तो ये दो बंदे चाहिए. ठीक है, इफ यू हैव टू जस्ट एक्सेस एनी लोकेशन इन एक्स्ट्रा सेगमेंट, सो दिस आर द टू थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एंड लाइकवाइज इन स्टैक सेगमेंट. आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टूड? और ये जो थिंग्स है ये म्यूपी में है. ये सब ये बंदे ये म्यूपी में, और ये जो बंदे ये जो भी है ये मेमोरी में. समझ में आ रहा है क्या? मेमोरी एंड म्यूपी अलग है. म्यूपी और मेमोरी मतलब ये मेमोरी बाहर है म्यूपी के. समझ में आ रहा है क्या? तो ये बंदे म्यूपी में और ये मेमोरी के पार्ट है. I hope you are getting it. Understood? Yes. Yes, sir. Okay, so that is all regarding this particular thing. Now इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में बोलूंगा and you have to answer this, you have to search for this one. I will just ask it later on when I just complete with this particular building. Okay, now just let come to this one. Now this is what 6 byte instruction 6 byte prefetch queue. 6 byte prefetch queue. ठीक है, अब ये क्या है? This is called the 6 byte prefetch queue or simply it is called the instruction queue. Getting it? ठीक है, so it is actually used to store 6 byte, it is actually used to store program inside a MUP or fetch the program from memory inside a MUP. ठीक है, now anyone knows what is the use of this one? 6 byte prefetch queue क्या होता है? बहुत सही चीज है, बहुत भारी चीज है एक्चुअली. This is my सर वो 2 bytes कुछ एग्जीक्यूट करता है, तो उस समय जो भी प्रीफेच करते हैं मींस एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो डेटा भी ऐसे मींस रीड. ठीक है, भावना पोसला या. ठीक है, लेट्स सी समझ लो. So what is this one? Is now this is called the instruction stream byte queue. Now we are just coming to this one, another part of the BIU. We have just done with the first building which is of 5 floors, जिसमें सब registers है that we have seen. Now we just come to this one, another which is called the instruction queue or 6 byte 6 byte queue. ठीक है, so it is just like this. A6 1 2 3 4 5 and let's suppose A6 है. Getting it? ठीक है, this is the instruction stream byte queue. अभी ये चीज क्या समझो? अभी ये चीज क्या? Now what is the function of this particular queue? Now this is what actually you may say the revolution in a processor. जिधर से मतलब प्रोसेसर एक्चुअल में थोड़ा स्पीड अप पकड़ना चालू किया ना, ये बिकॉज ऑफ ये चीज से. अब ये चीज क्या होती है? क्यू है व्हिच इज एक्चुअली हेल्पिंग फॉर पाइपलाइनिंग. अब पाइपलाइनिंग क्या होती है कि फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द करंट वन. ठीक है, फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द करंट वन, दैट इज कॉल्ड द पाइपलाइन. अब इससे स्पीड बढ़ता है. अब ये सब चीज क्या समझो आराम से. ठीक है, समझो. एंड व्हाई दिस नंबरिंग इज आल्सो उल्टा, व्हाई दिस इज ऑफ 6 बाइट. कीप इन माइंड म्यूपी में हर एक चीज के लिए रीजन है. जितना आप पूछोगे उतना मैं बताऊंगा. ठीक है, अदरवाइज जितना मेरे को याद आ रहा है सब बता के निकल जाऊंगा आगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी दैट इज 6 बाइट क्यू. अब होता क्या इसमें? ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन? नाउ यू कैन सी ओवर हियर इन अ डायग्राम, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड ऐसे जा रहे हैं. ठीक है, मतलब मेमोरी से जो भी आएगा बाहर से, ठीक है, इट विल जस्ट टेक इट एंड इट विल जस्ट डंप इट ओवर हियर. अब ये क्या है? दिस इज व्हाट, इसमें मेनली वी विल जस्ट स्टोर अ प्रोग्राम. जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वही स्टोर होता है. ठीक है, अब ये कैसे होता है? लेट्स सी. Now let's suppose we have seen in I think we have done one program, right? अपने एक एडिशन का कोई अगर प्रोग्राम किया था तो वो कैसा था समझो अभी फटाफट. और मैं बहुत टाइम लेता हूँ और एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, चल कुछ मानना नहीं. Let's suppose move AL, 03. Let's suppose move AX, 1 2 3 4 जो अपन ने किया था वही लेते हैं.
so it will be easy. move ax, 1 2 3 4. अब ये एग्जीक्यूट वगैरह कैसे होता है समझो अभी, ठीक है। खुद म्यूपी बनाओ, खुद फील करो किधर से कहाँ डेटा जा रहा है, किधर प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे आंसर आ रहा है, किधर स्टोर हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन मूव bx, 4 5 6 7, that is what we have seen. Then add ax, bx and then hold. This is what the program we have seen, right? Fine, यही प्रोग्राम देखा था ना अपन ने, ठीक है। Yes. We have seen it doesn't go like this in memory. memory में कुछ अलग ही जाता है। memory में कैसे जाता है, move x का कोड है, let's suppose I forward that code, let's suppose b8, ठीक है। then 1 2 3 4 जाता कैसे, 3 4 1 2, याद है, ठीक है। then this particular instruction जाएगा कैसे, let's suppose bb is a code for move bx, then 6 7 4 5, and let's suppose add x, bx के लिए कुछ तो कोड है e8 something, I don't know but I'm just taking randomly, and ff के लिए let's suppose hold के लिए ff है कुछ तो, ठीक है। so this is how the code will be decoded or stored into the memory, ठीक है। अभी समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी क्या हो रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग द होल पिक्चर एंड ट्राई टू जस्ट गेट ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यार मतलब आई जस्ट गो इन फुल डिटेल ऐसे हो रहा है सर, सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ फील ऑफ दैट म्यूट, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में कैसे होगा, ठीक है। अभी कैसे, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ योर मेमोरी, दिस इज द पार्ट ऑफ मेमोरी, आई एम नॉट सेइंग एंटायर मेमोरी, पार्ट ऑफ मेमोरी है, ठीक है। लेट्स सपोज कोड सेगमेंट, व्हाई, बिकॉज़ वी जस्ट स्टोर code in a code segment, that's why the name is your code segment, you have to store code in a code segment, ठीक है। let's suppose my code segment started from 20,000 समझो अभी, ठीक है। 20,000 मतलब CS में मेरे पास 2000 है और IP में मेरे पास 000 है, जहां से मैंने प्रोग्राम चालू किया, तो एक्चुअल लोकेशन बनेगा 20,000, डू यू एग्री। CS में वी आर हैविंग 2000 एंड IP में वी आर हैविंग 000, सो एक्चुअल मेमोरी में स्टोर चालू होगा, प्रोग्राम स्टोर चालू होगा 20,000 लोकेशन से। अब ये स्टोर कैसे होता है, पहले B8 जाएगा इधर, ठीक है, देन 20,001 लोकेशन में 20,001, इफ यू वांट यू मे जस्ट राइट लाइक दिस, अदरवाइज जो अपना सॉफ्टवेयर में दिखाता है ऐसा दिखाता है 2000 देन कोलन 001 ऐसा दिखाता है, तो दोनों भी सेम है, ऐसा तो जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 34 समझो, देन 20,002 लोकेशन पे यहाँ पे जाएगा 12, 20,003 लोकेशन पे यहाँ पे जाएगा PB, 2004 लोकेशन पे यहाँ पे जाएगा 67, फिफ्थ लोकेशन पे 45, सिक्स्थ हाँ लोकेशन पे E8, सेवेंथ लोकेशन पे FF, एंड लाइकवाइज ये मेमोरी है, ठीक है। सो ऐसा मेरा अभी प्रोग्राम कॉपी हुआ है, 1 2 3 4 1 2, कुछ तो गलत किया मैंने, नहीं राइट है 1 2 3 1 2 3 या राइट, ठीक है। सो दिस इज हाउ माय प्रोग्राम इज बीन कॉपीड, ठीक है। एंड इसके आगे भी प्रोग्राम है, लेट्स सपोज कुछ तो है, दिस इज व्हाट देयर इन अ मेमोरी, ठीक है। नाउ अभी देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड गेट द फील ऑफ दैट न्यूपी होता क्या है, ठीक है। नाउ अभी हु विल टेल फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम बिगिंस, CS एंड IP ना, ठीक है। अब CS एंड IP जगह समझो अभी क्या होता है, CS एंड IP विल पॉइंट ओवर हियर, यहां से प्रोग्राम चालू होता है, फ्रॉम हियर द प्रोग्राम बिगिंस, ठीक है। अब होता क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है समझो अभी क्या होता है, ठीक है। नाउ दिस इज द पार्ट व्हिच इज देयर इन मेमोरी, दिस इज द पार्ट व्हिच आई एम टॉकिंग, आई विल जस्ट चेंज द कलर सो दैट जो मैं करूंगा आपको समझेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट देयर इन मेमोरी, ठीक है। एंड दिस क्यू दिस इज इन म्यूपी, समझो अभी ये म्यूपी में है और ये मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, नाउ व्हेन आई गिव दिस एड्रेस, ठीक है, अभी होता कैसे समझो होता कैसे, ठीक है। नाउ दिस द BIU, ये क्यू इट इज इन BIU, अब ये क्या करेगा, नाउ इट विल मतलब इट विल जस्ट गो टू द एड्रेस एंड इट विल जस्ट फेच दैट एवरीथिंग, मतलब फेच द प्रोग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे पास CS एंड IP बोथ इज अवेलेबल, बोथ आर अवेलेबल विद द BIU, मतलब मैं कोड सेगमेंट एक्सेस कर सकता हूं समझो, ठीक है। CS एंड IP बोथ BIU में, कैसा ये डायग्राम वी हैव सीन, ये CS है और ये IP है, अरे इसको वो लिख भी सकते हैं, अच्छा है मस्त है, ठीक है, अच्छी बात है, कहां पे ओपन हुआ है, ओके, ठीक है। सो CS एंड IP दिस बोथ आर विद द BIU, सो BIU कैन गो टू द प्रोग्राम का लोकेशन, ठीक है। कीप इन माइंड बाकी सब इधर है बट IP इधर है, ये जो ऑप्शन है इधर है, सो मींस व्हाट इट कैन गो टू द प्रोग्राम का लोकेशन, मतलब वो पहले से ही जा सकते हैं, ठीक है। नाउ इट विल जस्ट गो टू द लोकेशन, अब होता कैसे देखो, ठीक है, इट विल गो टू द लोकेशन, नाउ इट विल जस्ट स्टार्ट फेचिंग द थिंग, अब ये फेच करेगा जो भी प्रोग्राम है उसमें से, आउट ऑफ द प्रोग्राम का 6 बाइट है, जो भी 6 बाइट है, 6 बाइट मतलब वी हैव सीन कि मतलब why we have shown like this one, because each memory location पे we can store only 8 bit, that is what we have seen yesterday, ठीक है। मेमोरी के एक लोकेशन पे we can store only 8 bit, that's why ये डेटा ऐसे जाता है, मतलब दो इट इज ऑफ वन इंस्ट्रक्शन बट वो ऐसे 3 लोकेशन में डिवाइड होगा, because we can store only 8 bit और 1 byte at one location। अब ये B8 है 3 4 ऐसे गए, अब ये क्या होगा बताएं, अब ये न्यूपी क्या करेगा, इट विल जस्ट गो टू द लोकेशन, जो भी ये डेटा पहला 6 बाइट ये उठा के लेके आएगा इधर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये B8 फेच करेगा, B8 फेच करेगा, रखेगा किधर क्यू में, विच लोकेशन पे, इट विल जस्ट फेच अ 1, ये इधर रखेगा समझो, ये 1 नंबरिंग ऐसा क्यों है, अगर मैं नंबरिंग ऐसा करता तो गलत होता था,
समझे नंबर भी उल्टा क्यों है, ठीक है। वंस अगेन यूपी में हर एक चीज के पीछे रीजन है, हर एक चीज के पीछे, यू जस्ट आस्क इट, आई विल टेल यू, ठीक है। सो नाउ दिस B8 विल कम ओवर हियर, गेटिंग इट। उसके बाद इट विल जस्ट फेस इज 34, समझो ये पहले से फेस करके रखेगा, पहले 6 बाइट ऑफ द प्रोग्राम और ओनली 6 बाइट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे 6 बाइट का ही है। एंड व्हाई 6 बाइट, एनीवन नोस व्हाई 6 बाइट ओनली? लकी नंबर है क्या यूपी का 8086, इसलिए ये 6 का है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन लॉन्ग इंस्ट्रक्शन 6 बाइट्स के लिए। या परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। व्हाई 6 बाइट यूपी में, एज आई टोल्ड, हर एक चीज के पीछे रीजन है, तो पूछता जाने में बताया जाएगा, और वो मेरे को जितना आएगा मैं मतलब जस्ट उस टाइम पे दिमाग में आएगा वो मैं बताएगा, ठीक है। व्हाई 6 बाइट? बिकॉज़ नाउ दैट इफ यू सी द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 886, द लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 6 बाइट, ठीक है। सो व्हाट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेज, द इंस्ट्रक्शन क्यू सेज कि मतलब वी आर फेचिंग सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज फाइन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इंस्ट्रक्शन आधा आ गया, ठीक है। एटलीस्ट वी मस्ट हैव द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, so that's why this q का size is 6 byte, ठीक है, ठीक है। अब होता कैसे, now this B8 will come over here, 34 will come over here, 12 will go over here, BB will go over here, 67 will go over here, 45 will go over here, and E8, अरे कुछ ज्यादा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, बस खत्म यहाँ पे 45 तक गया, ठीक है। सो 45 तक डेटा उसने स्टोर कर लिया इधर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऐसा नंबर है कि यहाँ पे 6 है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ BI, sorry, instruction sim byte queue. It will just load first 6 byte of program into the queue. It will just load the first 6 byte of program, not first, or subsequently 6 byte आते जाएगा, but समझो अभी, ठीक है। So initially it will just load the first 6 byte of program into the this particular queue register, ठीक है। अभी next part क्या होता है, now this is the part which is loaded in a BIU, मतलब ये प्रोग्राम पूरा नहीं लोड हुआ है, समझो इधर तक ही लोड हुआ है, इधर तो हुआ है B8 से लेके यहाँ तक ना, यहाँ तक लोड हुआ है, ये E8 एंड FF बाकी है, अभी तक पूरा प्रोग्राम लोड नहीं हुआ है, समझो, ठीक है। इट विल जस्ट लोड फर्स्ट 6 बाइट ऑफ द प्रोग्राम, ये लोड हुआ, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हुआ क्या अभी? एग्जीक्यूट नहीं, लोड हुआ, समझो समझो समझो, अभी समझो अभी समझो अभी समझो, ठीक है। इसको इसको उसको BIU बोलते हैं, EU बोलते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड, जो भी दिमाग है ना, दिमाग वो EU में है, whatever मतलब to process, to think, to do some operations and all, वो सब इधर EU में, because ALU को दिमाग बोलते हैं। ये सब गधा मजदूर है, मतलब जो जैसे काम बोलेंगे वैसे करोगे, ठीक है। इनको कुछ समझता नहीं है, ये मतलब जो मैं बोलेगा तो चल इधर से डेटा लेके उठा के लेके आएंगे, हाँ, बट क्या उठा के लेके आए, उसमें क्या चीज है, क्या प्रोग्राम, उनको कुछ नहीं समझता, जो भी समझने वाला चीजें आ गए, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ दिस दैट प्रोग्राम इज स्टोर्ड ओवर हियर, अभी समझो यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट पाइपलाइनिंग, फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द करंट वन, उसका फायदा क्या है, समझो समझो समझो, ठीक है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। यार अभी सवाल खत्म कब होगा फिर, ठीक है। आई विल गो विद माय बेस्ट, एंड व्हेनेवर आई फील कि यहाँ से थोड़ा फास्ट जा सकते तो फास्ट जाऊंगा, ठीक है। या सो इट्स अ 6 बाइट क्यू, ठीक है। नाउ हियर द प्रोग्राम इज स्टोर्ड, now what is happening is that if you want to execute now this data is given to the EU, you can see the arrow over here, यहाँ पे BIU actually यहाँ पे खत्म होता है, and which is given to the EU, यहाँ पे control unit, इसको समझता है, मतलब in control unit we are having that instruction register, instruction decoder and all, which actually हाँ बोल, आप जो पॉइंट विंट कर रहे हो वो दिख रहा नहीं है, अगला पॉइंट दिख नहीं रहा है, नहीं, मतलब कैन यू सी द डायग्राम? डायग्राम, हाँ सर डायग्राम दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हाँ अभी मैं एवरी टाइम नहीं कर रहा हूँ, एवरी टाइम नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत गंदा हो जाएगा फिर स्लाइड, इसके लिए हम डूइंग एवरी टाइम, या ठीक है। ओके, नाउ जैसे 6 बाइट की यहाँ पे वो प्रोग्राम लोडेड है, अपन ने देखा। अब होता कैसे, नाउ ईच एंड एवरी बाइट विल गो टू द कंट्रोल यूनिट, अभी इसमें भी एक राज है, हर एक ईच एंड एवरी बाइट कभी जाते ही नहीं इधर कंट्रोल यूनिट में, अभी ये सब बताते जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा। अब ठीक है, समझो क्या होता है कि now that one with the what are the part of the program, now here we are having a part of the program, not entire program को भी होता ही नहीं इधर, होएगा ही नहीं, because 6 बाइट ही इधर, ठीक है। प्रोग्राम बड़ा भी हो सकता है, बस जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टोर्ड हो रही है, ठीक है। नाउ फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, अभी BI बोलेगा मैं उठा के तो लेके आएगा, मेरे को समझते नहीं क्या करना है, मैं तेरे को भेजता हूँ, ठीक है। नाउ इट विल जस्ट कीप ऑन पासिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू द EU, इसको पास करेगा अभी वो, ठीक है, एग्जीक्यूशन यूनिट, बिकॉज यहाँ पे दिमाग है, कंट्रोल यूनिट ALU वगैरह सब इधर है, जिनको समझता है एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। नाउ अभी होता क्या है, नाउ इट विल जस्ट पास दैट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अभी समझाओ, ये आ जाओ इधर, ठीक है। अब ये जो B8 है, अभी वो नीचे गया, कंट्रोल यूनिट के पास गया। अब B8 मतलब मूव x, समथिंग होता है, वो समझेगा, ठीक है। बट अभी समझो अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये नीचे गया ना, B8 नीचे गया, अब B8 नीचे गया तो क्या होगा, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन सिम बाइट में क्या होगा, एक स्पेस खाली होएगा, हाँ, अभी B8 नीचे है ना, अभी क्या होता है, एक एक ना सब्सिक्वेंटली नीचे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अब ये 34 इधर जाएगा, देन 12 इधर आ जाएगा, समझो BB इधर आ जाएगा,
ठीक है, 67 इधर आता है, 45 इधर आता है, ठीक है। एंड अभी ये 6 वाला लोकेशन जो ऊपर वाला है, अब वो एम्प्टी हो गया ना। Are you getting it? This is going to be now this is going to be empty, ठीक है। अब होता क्या है, now ये this B8 will go for execution, अब ये नीचे का execution के लिए, मतलब जो EU है उसके ऊपर काम कर रहा है। हाँ B8 मतलब सोच रहा है, हाँ B8 मतलब क्या होता है, हाँ B8 मतलब move AX, समथिंग, मतलब ये X में 16 बिट का कुछ तो वैल्यू डालना है, मतलब ये सोच रहा है इधर, ठीक है। इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड ओवर हियर। एट द सेम टाइम नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जैसे इधर एक खाली हुआ, अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा ये खाली हुआ ना, लोड कर दूसरा, ठीक है। इट विल जस्ट आज अभी 45 तक लोड हुआ है ना, इसको E8 को बोलेगा चल आजा तू, एंड इट विल जस्ट लोड इट ओवर हियर। आर यू गेटिंग इट? And these are the two things which are happening parallelly. Now this is what is the pipelining. One second, I don't understand now. Okay, now this is what fetching the next instruction while executing the current one. Are you getting it? Fetching the next instruction, ये वाला fetch करने का, while executing the current, मतलब जैसे ही execute की जगह खाली हो जाएगा, and whenever it is executing, it will fetch another instruction, and that is called as pipelining. Fetching the next instruction while executing the current, that is called as a pipelining. Are you getting it? ठीक है, जैसे ही अब ये 34 भी जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और एक ऊपर जगह खाली हो जाएगा, देन उसके बाद ये FF को भी लोड करेगा। समझ में आ रहा है? लाइकवाइज इट विल जस्ट कीप ऑन लोडिंग, ठीक है। अच्छा अभी FF आ गया, ठीक है, लेट्स सपोज अभी 12 भी नीचे गया, अब उसके बाद क्या हुआ, FF तो एक्चुअली अपना एंड ऑफ द प्रोग्राम है, उसके बाद क्या होगा, विल इट फेच द नेक्स्ट डेटा? समझो समझो, अगर डिप्लोमा होता है यार आपको आना चाहिए सब आंसर थोड़ा। फेच नहीं करेगा नेक्स्ट डेटा, मतलब ये खाली रहता जाएगा। ओके, एनीवन एल्स? सर करेगा। यस, फेच करेगा, वो फेच करते ही जाता है, जब तक ये FF इधर नहीं आता तब तो फेच करेगा। जब से FF जब इधर जाएगा ना, मतलब ऐसा नहीं क्या होता ये 6 बाइट क्यों खाली रहेगा, ये भरा रहेगा, समझो। मतलब नेक्स्ट जो भी गार्बेज वैल्यू ना सब वो लोड करेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड, BIU को दिमाग नहीं है, दिमाग किसको, एग्जीक्यूशन यूनिट को। इसको समझता नहीं है प्रोग्राम किधर खत्म हुआ, वो तो उठाने का काम करेगा, जैसे खाली हुआ एक एक उठाते लेके जा, ठीक है। बट व्हेनेवर FF विल गो टू द EU, हाँ वो उससे समझेगा ये अभी एंड ऑफ द प्रोग्राम है, बाकी का डेटा मुझे नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? फंडा समझो, म्यूपी समझो क्या होता है, बिकॉज जस्ट बुक रीड करने से ये सब नहीं है। एज आई टोल्ड, म्यूपी इज फुल ऑफ फंडास, इफ यू अंडरस्टैंड देन यू विल एंजॉय गेटिंग इट, ठीक है। सो नाउ कीप इन माइंड, एफए मतलब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मेमोरी में कुछ नहीं, मेमोरी में कुछ ना कुछ तो गार्बेज वैल्यू रहते हैं, अदरवाइज जीरो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो दैट जीरो विल कीप ऑन पैडिंग ओवर हियर। एंड इसको कैसे समझेगा प्रोग्राम किधर एंड करना, ये इसको समझता है EU का, जैसे FF जाएगा इधर तो उसको समझेगा एंड ऑफ द प्रोग्राम है, तो बाकी का वो लेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या प्रोग्रामिंग कैसे फेच होता है, कैसे काम करता है, मेमोरी से कैसे आता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पाइपलाइनिंग, fetching the next instruction while executing the current one, ठीक है। नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ इट हेल्प्स मी? ये दिस इज कॉल्ड, दिस इज एक्चुअली द इनोवेशन इन अ प्रोसेसर। ये एक सुपर एक माइलस्टोन था एक्चुअली, ठीक है। नाउ कैन एनीवन टेल मी इससे फायदा क्या हुआ, fetching the next instruction while executing the current one? फास्ट हुआ, increases the speed. फास्ट हुआ कैसा? क्योंकि फेच के हाँ जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है सर तभी नेक्स्ट मेमोरी डेटा से वापस। हाँ चलो एक जन बोलो। सर हाँ बोल। सर मेमोरी से एक एक डेटा लाने से स्पीड ये है, क्योंकि इसमें म्यूपी में ही आ जाता है डेटा, या फिर हर बार मेमोरी में जाना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है। अभी कैसे देखो, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल तो समझेगा आपको। अभी 8085 में कैसा था, जो पहले वाला प्रोसेसर था, इधर मेमोरी है। 8085 में क्या होता था, 8085 में क्या होता था समझो। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। इज इट ऑडिबल नाउ? आ रहा है क्या? ओके, स्क्रीन इज आल्सो विजिबल राइट? ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई डू नॉट हैव पाइपलाइनिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट्स सी। If I do not have pipelining, then what will happen is that now let's suppose the program which is there in a memory, ठीक है, 8085 में पाइपलाइनिंग नहीं था, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ता था, 85 को जाता था बाहर मेमोरी में, उधर से एक बाइट लेके आता था, ठीक है, लेके आता था, उसको एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से बाहर जाता था, दूसरा बाइट लेके आता था, एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है समझो, कैसे हो रहा है देखो समझो। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है which is of 4 instruction, I1 I2 I3 I4, these are the instructions, ठीक है। I1 I2 I3 I4, these are the instruction, ठीक है। अभी लेट्स सपोज दिस इज अ प्रोग्राम वी हैव टू एग्जीक्यूट बाय यूजिंग 8085, यार 223 हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वी हैव टू एग्जीक्यूट बाय यूजिंग 8085। कैसे होता है देखो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल जस्ट फेच I1 फेच किया, ठीक है। उसके बाद इट विल डू I1 एग्जीक्यूट, I1 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद इट विल डू दैट I2 फेच, समझो, ठीक है। देन I2 को एग्जीक्यूट करेगा। ये जाता क्यों है यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या होता है।
Fine. Then it will do this one, I3 fetch, then I3 execute. We just consider about I3 only. चल समझो अपना जगह खत्म हो गया. ठीक है. So this is how the program will get execute in 885. ठीक है. And समझो for each and every step is required 1 second. For each and every thing it required 1 second. ठीक है. So to execute the 3 instruction, it requires 6 seconds. Understood? This is what is happening in 885, means where the pipelining is not present. Okay, it has to fetch and execute, because program का execution ऐसे होता है, fetch and execute. But यहाँ पे fetch separate, execute separate, execute separate, likewise. ठीक है. But now if I come for 886, क्या होगा पता है? ठीक है. पहले से इधर मतलब fetch रहेगा. Try to understand. पहले से इधर fetch रहेगा. मतलब प्रोग्राम ऐसा, मतलब some part of the program is fetch. अब क्या होगा? Try to understand. ठीक है. पहला इंस्ट्रक्शन fetch किया, उसको टाइम लगा fetch करने को. समझो. ठीक है. उसके बाद it will go for execution ना. I1 will go for execution. Try to understand. मतलब it will go for execution, मतलब जो नीचे भेजेगा 886 में. ठीक है. तो उसको भी टाइम लगेगा. ठीक है. But now what will happen is that whenever I1 is getting executed, what will happen? I2 is fetched. उसी सेम टाइम स्लॉट में होगा. समझ में? 885 is actually taking place in different time slot, but यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसे सेम टाइम पे उसने फेच किया ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. Are you getting it? That is what is fetching the next instruction, that is a 2 और executing the current one. समझ में आ रहा है? ठीक है. अभी ले सपोज I2 फेच हुआ, अब I2 एग्जीक्यूट होने जाएगा. जैसे I2 एग्जीक्यूट होने जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यार ये क्या होता है? या जैसे I2 एग्जीक्यूट होने को जाएगा, at the same time it will start fetching I3. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. जैसे I3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, it will fetch another one. ठीक है. तो now let's suppose my program is of 3 instruction, so it will just consider it will just take 1 2 3 4 times, मतलब 4 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा. 4 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. So now let's suppose, so you can see over here, if that pipelining is not present, अरे क्या हो रहा है? Pipelining is not present, so it has taken 6 seconds, and pipeline present is 4 seconds. टाइम बच गया ना? ऐसा ना टाइम कम हुआ कि नहीं? अच्छा, टाइम ड्रास्टिकली कम हुआ है कि एकदम थोड़ा बहुत ही कम हुआ है? थोड़ा बहुत ही कम है. 1 सेकंड में 5 सेकंड में. Now let's suppose my program is of 100 instruction. अब my program is of 100 instruction. तो without pipelining मतलब 885 में उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 200 seconds. 200 seconds. Perfect. ठीक है. And if you have to execute by using 886, तो कितना टाइम लगेगा? 101 seconds. 101 सेकंड. परफेक्ट. इंस्ट्रक्शन प्लस 1. यहाँ पे you can see 3 इंस्ट्रक्शन तो प्लस 1 4 सेकंड लगते हैं. ठीक है. Here it will take 200 सेकंड, here it will take 100 सेकंड. मतलब रिड्यूस होता है, डायरेक्टली हाफ होता है, एंड टाइमिंग हाफ हुआ मतलब का स्पीड डबल. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ पाइपलाइन. स्पीड डायरेक्ट डबल कर देता है. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. सो दैट्स व्हाई दैट इज व्हाट इज द फीचर ऑफ पाइपलाइन. नाउ जस्ट कम टू दिस वन. I have taken enough time here. So this is the 6 byte queue. ठीक है. Now you can just talk everything. This is a 6 byte queue which is actually used to fetch the program from the memory. That is will be given by the CS and IP. ठीक है. We store this in a FIFO manner. That is called FIFO manner. What do you mean by FIFO? First in first out. Yeah. So you store the data first in जो भी आएगा यहाँ पे आएगा, and वही first out जाएगा. That is called the first in first out. There is another which is called the LIFO manner. Last in first out. वो stack में काम. ठीक है. So this is the first in first out. So this 6 byte queue works in a FIFO manner. That first in first out. जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा, likewise. ठीक है. So this is a 6 byte instruction queue which can store a 6 byte of program from the memory. ठीक है. It works in a FIFO, the first in first out, and it supports pipelining. It is fetching the next instruction while executing the current one, and because of this speed get increased. That is what you have to write. But to write this one, you have to understand this many things what we have just seen right now. Understood? Once again, pipelining वो मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक के बारे में लिखना क्या कुछ नहीं, लिखने का तो 40 सेंटेंस है, बट समझने के लिए बहुत कुछ है. ठीक है. Once again, it's a 6 byte queue which can store the 6 byte of the program from the memory, which address will be given by the CS and IP, which both are present in the PIU. ठीक है. Second, it works in a LIFO manner. That is the last in first out. Now it supports a pipelining. Pipelining is fetching the next instruction while executing the current one, and because of this, speed of the execution or the speed of the processor get enhanced. Okay, so that is what you have to write. But to write this one or to understand this one, yes, you need to understand this whole theory and मतलब पीछे mechanism क्या चल रहा है. Understood? Any doubt regarding this one? Sir, वो प्रीलोड करता है ना 6 bytes, उसके बाद एग्जीक्यूशन एंड फेचिंग स्टार्ट होएगा ना. हाँ. एक बार 6 पूरे.
हाँ बोल, हाँ 6 बाइट पूरा लोड होगा। मतलब जब I1 इधर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो इधर 7th लोकेशन पे जो भी रहेगा मतलब नेक्स्ट वो लोड होगा। इट वोंट बी द I2 एग्जैक्टली, बट कुछ रहेगा। मतलब होता तो वही है, पेजिंग द नेक्स्ट सिस्टम वाला एग्जीक्यूट करना हुआ, करंट एग्जीक्यूट तो नेक्स्ट फेच करके रख रहे हैं। गेटिंग इट? ओके हाँ समझिए? ठीक है, ओके सर। अभी और एक इसमें थोड़ा डिटेल में जाओगे? यस और नो? और डिटेल में घुसने का? हेलो, सर क्या बोला? और डिटेल में जाने का क्या? और थोड़ा और एक और डिटेल में जाने का क्या? हाँ चलेगा। यस सर। अरे आपका सिलेबस कभी नहीं होगा फिर ऐसा। मुझे क्या, मैं बताने के लिए बोला ना, बीपीएस सब फुल है, सब फाड़ के रख देगा, बट प्रॉब्लम इज टाइम नहीं रहेगा फिर अपने पास, बिकॉज़ वी हैव टू, दिस इज अ वेकेशन बैच, मतलब वी हैव टू कवर द सिलेबस इन जून एंड जुलाई, एंड एज इज कंसीडर दैट यू आर डिप्लोमा पीपल, सो दैट वी कैन गो फास्ट इन एमपीएमसी। ठीक है, चलो और एक बात बता देता हूँ। ठीक है, अभी एक 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 क्या बोलते हैं अंदर की बात। ठीक है, समझो होता क्या है। 6 बाइट क्यों ऐसा टोल होता है, मतलब व्हाट आई टोल्ड टू यू इज दैट क्या फ्रॉम B8 अप टू दी 45 तक लोड किया, इधर तक लोड किया उसने। ठीक है, व्हाट आई टोल्ड इज दैट व्हेनेवर द B8 गोस फॉर एग्जीक्यूशन, यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगा एंड इट विल लोड दैट। बट एक्चुअल में इफ यू सी ना, एक्चुअल में मतलब ये कैसे देखते ना, कैसे बताओ आपको, जाने दो। ठीक है, इफ यू जस्ट सी एक्चुअल में मतलब डेटा कैसे, इफ यू जस्ट मॉनिटर एवरीथिंग, ठीक है, तो समझेगा जब ये खाली हो जाएगा ना, ये भरता ही नहीं है। Are you getting it? मैंने आपको थोड़ा सा एडा बनाया। ठीक है, execution will just load that instruction, next won't load, it will not load that, नहीं लोड करता जब देखा है। मतलब इफ यू सी एक्चुअल में, मतलब उसको अगर अगर वो क्यू लाइन वगैरह सब ट्रेस करोगे आप लोग तो समझेगा यहाँ पे लोड नहीं करता है वो, इट डजंट लोड। ठीक है, इट विल वेट फॉर ये 34 भी एग्जीक्यूट होने के लिए। जब 34 एग्जीक्यूट होगा तब जाके दो लोग को एकदम उठा के लेके आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब एक जगह खाली होगा ना वो भरता नहीं है, जब दो जगह 2 खाली, बाइट्स। हाँ तो भरता है वो। ठीक है, और ये और एक खासियत, बट कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाई इट डज लाइक दिस वन? अरे डिप्लोमा है हो कि नहीं तुम लोग, मुझे डाउट आता है यार। हाँ चलो बोलो, एनीवन? नाउ दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू द सीक्रेट। सीक्रेट क्या है कि व्हेनेवर इट गोस वन फर्स्ट बाइट गो फॉर एग्जीक्यूशन, इट विल नॉट लोड देन अनदर बाइट, मतलब एक बाइट नहीं लोड करेगा, इट विल वेट फॉर वन मोर लोकेशन टू गेट एम्प्टी, और एक लोकेशन एम्प्टी का तब जाके उठा के लेके आता है, तब तक नहीं लेके आता। अभी आपको मैंने सीक्रेट बता दिया इसका। अब कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट डज सो, व्हाई दिस 16 बिट का रहता है। ओके सर परफेक्ट 16 बिट का डेटा लाइन है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, अभी लेट्स सपोज मतलब इफ B8 गोस फॉर एग्जीक्यूशन, उसने अगर नेक्स्ट डेटा उठाया, ठीक है, मतलब उसको नेक्स्ट डेटा उठाने के लिए, ठीक है, लेट्स सपोज अभी और एक दूसरा भी गया तो नेक्स्ट उसको उठा नहीं, मतलब फिर से टाइम लगेगा, मतलब दो बार मेहनत करनी पड़ेगी। डेटा लाइन ऑफ द 86 इज 16 बिट। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, मतलब मैं 8 बिट तो उठा सकता है, कैपेसिटी 16 बिट, मतलब मैं 8 बिट भी उठा सकता है, बट मेरा टाइम वेस्ट होगा ना। लेट टू प्लेसेस गेट एम्प्टी, तब जाके मैं दोनों उठाएगा ना, तो एक साथ में काम होगा मेरा, तो 2 सेकंड का काम 1 सेकंड में होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग इट? यस यस दैट्स व्हाई एक्चुअली इफ यू सी ना, इट वेट्स फॉर टू लोकेशन टू गेट एम्प्टी, और उसके बाद भरता है वो। चलो, मैं बहुत ज्यादा डीप में जाएगा तो फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा, अपने को एंटायर यूपी का आर्किटेक्चर खत्म करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। मतलब बीआईयू क्लियर है अभी? एनी डाउट इन बीआईयू क्या काम होता है, कैसे होता है? यस Okay, now just go to the EU. अब थोड़ा सा स्पीड में जाएगा because I think you must know these particular things. These are very easy and you can just read from notes and you will get it. Now, what are the fundas I have explained, because I know if you just read it, आपको कुछ नहीं समझेगा. If I just say pipelining, paging the next system will execute the current instruction, and it will just increase the speed of the processor. So if I just read like this one, you won't get a feel actually में क्या हो रहा है. So that's why I taken this much time. ठीक है, but so the things are little bit easy. So I will not take much more time on this one. Okay, so now EU, come to the EU. What is the use of EU is that first of all it is actually used for executing the program or executing the instruction. Okay, second thing is that it will instruct BIU from where to fetch a data. Try to understand another task of EU. It will actually instruct BIU from where to fetch the data. Okay, keep in mind I'm saying it will instruct BIU from where to fetch the data. Okay, why I'm saying like this, because we are having the segment registers over here or segment address over here or base address over here, but we do not have offset address. अब offset address इधर है,
तो कुछ भी अगर डेटा दूसरे सेगमेंट से उठाने का तो उसको ये देना भी पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि EU विल इंसर्ट BIU फ्रॉम वेयर टू फेच डेटा। आप इधर यहाँ पे लिंक दे सकते हो, यहाँ पे वो ये लाइन पे पास करेगा, ये लाइन से ये उठा लेगा और इधर से वो जाएगा बाहर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सो यहाँ पे बेस एड्रेस यहाँ पे रहेगा, इधर से आ जाएगा। फाइन, इसको पॉइंट आउट कैसे करते हैं? ओके, यहाँ से तो आ जाएगा। ओके ठीक है, अब सॉरी ऑफसेट एड्रेस का यहाँ से मतलब यहाँ से एक कुछ तो इधर आएगा, इधर से ऐसे जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या? Getting it? So this is how it, that's why it is called the EU will insert BIU from where to fetch your data. Getting it? ठीक है, so Yes. yeah, that is what is there. That is what the functions of EU. Once again, two functions meant to use the program, and second it will insert BIU from where to fetch your data. But that's why I said where to fetch your data. I'm not a program, because from where to fetch a program, he that BIU itself knows. Why? Because उसके पास C हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रहा है। ओके, सर नेटवर्क इशू आ रहा है। guys, am I audible? हेलो, यस यस सर, हाँ, तो नेटवर्क का इशू हो गया था। ये गाइस एक काम करके रखो है ना, मेरा ना एक, चलो आई एम गिविंग दैट कांटेक्ट नंबर, एनीथिंग हैपेंस मैं तो अपने मूड में पढ़ाते रहे, so just keep reminding कि you are out of network और जो भी है। So this is my number, हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ नेटवर्क का इशू हो रहा है, आई थिंक फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, विल गो अहेड। व्हेयर आई वाज, व्हाट आई वाज टेलिंग। Sir, it tells the BIU from there हाँ to हाँ हाँ, रिमाइंडिंग में अदर टूल, मतलब मैं भूलता बहुत हूँ। ठीक है क्या, तो EU का काम क्या, इट मींस जस्ट इंसर्ट BIU फ्रॉम वेयर टू फेच डेटा एंड सेकंड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अभी नाउ वी विल सी दिस फटाफट। आई होप यू नो लिटिल बिट अबाउट दिस वन। इसमें इतना ज्यादा फंडा नहीं है, सो आई विल नॉट waste much more time on this one. ठीक है, so here we are having that this registers we are having, they are not called as any base address and जो भी है, मतलब these are the register I will just say. ठीक है, so this registers are divided into two part, general purpose register and the offset address register. ये ऊपर वाला पार्ट जनरल पर्पस रजिस्टर एंड दिस आर कॉल्ड एज ऑफसेट एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, वंस अगेन इट इज अ 8 फ्लोर बिल्डिंग, ऊपर वाले 4 जनरल पर्पस, नीचे वाले 4 ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, नाउ इन जनरल पर्पस वी आर हैविंग ABCD and they are divided like higher lower higher lower higher lower higher lower. ठीक है, means what, this is of 8 bit, this is of 8 bit, and combinedly if you want to use, you may use that AX which will be of 16 bit. Do you know all these things? yes, yes, So मतलब I will not waste more time on this one, ये 8 bit क्यों किया and all. Okay, likewise for the BHBL, CHCL, DHGL. If you want to use 8 bits, then you can just use like higher and lower part of it. If you want to use 16 bits, you can just combine them. Okay, and keep in mind, now they are, though they are general purpose register, that each and everyone have its own special function as well. Okay, a special function कैसे, that AX is actually many times it is actually used to store some data, and whenever we want to exchange anything outside the MUP, or whenever we want to deal with the IO devices and all, okay, so data will go through AX only. Getting it? AX can be used as accumulator वगैरह वो भी है, but some special function of each and every register. Once again, that AX can be used to exchange data. If you want to deal with any of the IO devices, that data has to go through the accumulator or A register.
BX register, BX register is actually used, मतलब they are general purpose, we can use it for the general purpose. Okay, so BX register is actually used sometimes for a base address, giving the base address. Okay, CX register it is actually used as a counter. voice is breaking. अरे यार shit, नेटवर्क क्या करो आ रहा है ठीक से? सर आ रहा है ठीक से, आ रहा है ना? बाकी लोग को ठीक आ रहा है ना? सर बीच में ब्रेक होता है। No, यार ऐसा क्यों रहता है? I'm talking on microphone actually. Sorry, on headphone. मैं डायरेक्ट लैपटॉप का ही माइक यूज कर रहा हूँ because I don't like to put something in here. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क. ठीक है, या okay, so BX is actually used to give a base address, CX is actually used as a count in some instructions, ready, and DX is used with AX, or DX is actually used with used in multiplication and division operation with AX to store the answer. Okay, and one more use of DX is that it is actually used to give addresses of the IO devices in indirect mode, addressing mode. Okay, so these are all the special functions of AX, BX, CX and DX. These are simple images. BX का क्या था? DX कैसे? It is actually used in multiplication and division with AX. That is the one use. ठीक है, to store the answer because answer is going to be the huge one or a 32 bit. तो उस time पे help करता है. And one more use is that it is actually used to store address of IO devices. 16 bit address in IO addressing mode. ठीक है, address of the IO devices. Getting it? सर स्क्रीन शेयर नहीं किया। वेरी सॉरी यार, 10 मिनट हुआ था ना कॉल, ये सब बीच में मैं याद कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपने धुन में रहेगा, और जनवरी टेक लेक्चर में हो जाता हूँ अपने इसमें, आई डोंट रिमेम्बर द रेस्ट ऑफ द वर्ड. इज इट विजिबल नाउ? यस सर. अरे आई वाज डूइंग समथिंग ओवर हियर. ठीक है, चलेगा, समझो आप लोग. तो AX, BX, CX, DX. ठीक है, AX काम it just मतलब it may be act as accumulator or whenever you want to send data outside the UP in IO devices, AX काम में आएगा. BX base address देने के लिए, CX counter जैसे यूज होता है. TX multiplication and division में it will just help AX to store the answer. And whenever you want to give the addresses, 16 bit address of the IO address, IO devices, then DX काम में आता है. ठीक है, so this is what is the use of this general purpose. Now then SP, BP, SIDA, these are what offset addresses. So they are actually used to give the offset address of segment. ठीक है, so we have seen मतलब to access any segment we require two addresses. base and offset. एक टेबल दिखा था मैंने. Yeah, this one. So to access any segment here, to access any segment we require two addresses, base address and offset address. अरे यार क्या बात है. Yeah, base address and offset address. So we have seen for each segment where the base address lies. अरे डिलीट हो गया, क्या हो रहा है? Sir, undo. Okay, yes, that is the best option. Okay, so we have seen where do we get the base address, but the offset address will be given by this one here registers. So हर एक register हर एक segment के लिए we require two addresses, base and offset, and दोनों को combine करके 20 bit का physical address बनता है. Getting it? Okay, so for CS that both the things are available in BIU, but for the rest of the segment, for the data segment, if you want, DS register is available in a BIU, but the SI is available in EU. Okay, likewise for the extra segment, the offset address which will be given by the DI, that is a destination index, SI मतलब source index. Okay, अरे यार ये क्या होता है? They are available in a BIU, and likewise for the stack segment, we can use a two offset address register, that is a base pointer and the stack pointer. Difference है actually that anyone knows the difference in base pointer and stack pointer? When do we use base pointer? When do we use stack pointer? VP में हर एक चीज के पीछे रीजन है. Anyone knows difference in these two, VP and SP? Base pointer, indirect addressing. Oh. Okay, ठीक है. I will just tell you short. The stack point is actually used to point top of the stack. हमेशा it will just point top of the stack. Top मतलब किधर से भरा है, किधर तक भरा है. ठीक है, and base pointer is actually used to access any location in the stack. I don't understand. दोनों में difference है. Stack pointer is always point at the top of the stack. किधर तक भरा है करके. And the base pointer, if you want to access any other location in a stack pointer, stack segment, then base pointer will be used. Okay? So stack segment के लिए we have two offset addresses and बाकी सब के लिए एक है.
अंडरस्टूड, ठीक है। अब इनका काम क्या, सेम एज आई टोल्ड आईपी के लिए दिस आर द ऑफसेट एड्रेस रजिस्टर व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड टू स्टोर ऑफसेट एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर रजिस्टर, पर्टिकुलर सेगमेंट, मेमोरी सेगमेंट, ठीक है। एंड फिजिकल एड्रेस कैसे बनता है, बेस एड्रेस इनटू ऑफसेट एड्रेस, खत्म, इट विल गिव द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस वेयर वी हैव टू लैंड अप, फाइन, ओके। सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग दैट ऑफसेट एड्रेस रजिस्टर्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, if you can answer then I will be happy, okay। You have seen one more thing over here, that yes, this all the what you can say that offset addresses they are over here in EU except IP, just IP ऊपर है, बाकी सब इधर है, क्यों? यहाँ पे we are having actually having where the base addresses ना, but उसके साथ we are having IP also, and बाकी सब जो भी offset addresses है सब इधर है except IP, IP भी EU में, क्यों? IP इधर EU में क्यों नहीं? Sir, because IP and CS and IP are used to take the code from the memory, and after that we can use the other pointers. Okay, anyone else want to try? ऐड करने के लिए मींस ऑफसेट। हाँ, तो बाकी सब ऑप्शन इधर क्यों छोड़ा फिर यू में, आईपी को ही क्यों ऊपर लिया? ये भी तो ऐड करने सर का वो एग्जीक्यूशन का ऐसा कुछ। चलो, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई विल लीव इट टू यू, यू हैव टू जस्ट सर्च फॉर इट एंड समझो, बिकॉज़ इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग, मतलब समझो ऐसा क्यों है, हर एक चीज में रीजन है एक्चुअल में, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब व्हाई दैट आईपी इज इन बीआईओ एंड व्हाई इट इज नॉट इन ईयू, बिकॉज़ रेस्ट ऑफ द बेस एड्रेस इज, सॉरी, ऑफसेट एड्रेस वी कैन सी इट ओवर हियर, बट आईपी ऊपर है, कुछ तो लॉजिक रहेगा, कुछ तो, अरे बहुत दिमाग रहेगा, मतलब समझो 86 कब बना है, उस टाइम पे इतना सब सोचा है उन लोगों ने, अपने को अभी जस्ट समझने को भी इतना डिफिकल्ट हो रहा है, उस टाइम उन्होंने सोच के इंप्लीमेंट किया, हाउ द ग्रेट पीपल दे विल बी, ठीक है। अच्छा, लेट इट बी। सो जस्ट दिस क्वेश्चन टू यू, व्हाई दिस आईपी इज इन बीआईयू, यू हैव टू जस्ट आंसर दिस वन, ठीक है। आई विल नॉट टेल ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज़ स्पून फीडिंग मेरे को पसंद नहीं है, मतलब यू आल्सो नीड टू टेक सम पेन, ठीक है। सो दैट इज ऑल। देन हियर वी आर हैविंग अ कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोल यूनिट, इज दैट अभी इसमें एक फंडा है, फंडा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में सिर्फ इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंस्ट्रक्शन में जो भी डेटा है ना वो नहीं जाता। Have you understood what I told, what I said right now? What I said once again, कंट्रोल यूनिट में जस्ट इंस्ट्रक्शन जाते हैं, इंस्ट्रक्शन के साथ जो डेटा है ना वो कभी नहीं जाता। Understood what I said? Anyone understood what I said? No. Anyone? Sir, can you repeat? Yeah. What happens in a control unit is that here only the instruction will go. Instruction will go. Instructions का जो भी डेटा रहता है ना वो नहीं जाता। अच्छा, if I just take this example, हाँ बोलो बोलो, if anyone understood, डिप्लोमा पीओ आपको थोड़ा पता होना चाहिए वो कंट्रोल सिस्टम में क्या जाता है क्या नहीं जाता है, बिकॉज वो पाइपलाइनिंग के नीचे लिखा है। हाँ ठीक है, बोलो, एनीवन नोज? सर डिकोड करने के लिए डेटा। ठीक है, देखो कैसे होगा, व्हाट आई एम टेकिंग, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अभी होता कैसे, लेट्स सपोज ये तेरा प्रोग्राम लोडेड है, मतलब B83412 वगैरह, ठीक है, बट B83412 ये एक इंस्ट्रक्शन है समझो, बिकॉज़ ये अपना move AX, 1234 है, wherein move AX का कोड इज B8, मतलब ये एक्चुअली ऑप कोड है। ये इंस्ट्रक्शन को भी जब डिवाइड करते हैं ना अपन ऐसे निमोनिक्स में आता है, इसमें भी दो पार्ट रहते हैं, ऑप कोड एंड ऑपरेंड, नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो ये ऑप कोड और ये ऑपरेंड है, देयर इज अ डिफरेंस इन ऑप कोड एंड ऑपरेंड, समझो, ठीक है। आई कैन से लाइक दिस वन, समझो, अरे एक एक फंडा बता जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा, मैं तो बता दे रहेगा। जैसे सपोज मूव B8, मतलब मूव B8 ऐसे, ठीक है। इफ इट गोज डिकोड इन अ मेमोरी, मतलब जो मशीन लैंग्वेज में जाएगा तो कैसे जाएगा, मूव के लिए कोड होता है B8, ठीक है, बट देन आल्सो माय डेटा इज आल्सो B8 एंड दिस इज आल्सो B8, ठीक है। जब इधर फेच होगा तो B8 आ जाएगा, समझो अभी, ठीक है। बट अभी फेच कैसे होगा, व्हेनेवर द B8 गोस टू द कंट्रोल यूनिट, मतलब अभी ये तो पक्का इंस्ट्रक्शन है B8, ये तो गया, बट नेक्स्ट B8 इज व्हाट, वेदर इज इंस्ट्रक्शन और डेटा, कैसे समझेगा, बिकॉज़ इसका ऑपकोड एंड जो डेटा है दोनों भी अभी सिमिलर है, मतलब बिकॉज़ इसमें आल्सो हैपन ना, गेटिंग इट, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं खुद समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं खामा का फोकट में डिटेल में जा रहा हूँ, इतने डिटेल में नहीं जाएगा मैं, आर यू गेटिंग इट और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल? यस,
I can't hear you. थोड़ा समझा. अब तो देखो Yes. run करेंगे. Whenever the instruction मतलब whenever that move x, 1 2 3 4 है समझो, तो एक्चुअल में ऐसे रिकॉर्ड होगा b8 3 4 1 2 मेमोरी में. It will fetch like b8 3 4 1 2 ऐसा उल्टा. Now b8 will go for execution. ठीक है. Now first जो भी कोड रहता है it obviously is going to be opcode only. कौन सा भी प्रोग्राम उठाओ first that byte जो भी रहेगा opcode ही रहेगा. ठीक है. It will go. Now whenever that it will just see that b8 means what move x, something means what. Now it will just understand b8 है मतलब क्या next जो भी 16 bit का डेटा है, जो भी 16 why 16 bit because move that b8 is a code for move x and x is और 16 bit मतलब next रहेगा वो 16 bit का डेटा रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. So now what will it will just take that b8 and जो 1 2 3 4 रहेगा ना उसको उठा के डायरेक्ट ax में डाल देगा. ये उसको मतलब ये कंटिन्यूट में नहीं आएगा. अब नेक्स्ट बाइट जो भी जाएगा वो bb जाएगा which is going to be once again new instruction. अब ये bb क्या है? move bx का ऑपकोड है ना, सिर्फ इंस्ट्रक्शन जाएगा बिकॉज b8 3 4 1 2 इसमें ये इंस्ट्रक्शन और ये डेटा है. समझा क्या? b8 1 3 4 1 2 इसमें इंस्ट्रक्शन बोलेगा मतलब इफ आई से इन न्यूमेरिकल लैंग्वेज ऑपकोड बोलते हैं उसको एंड इसको ऑपरेंड डेटा मतलब ऑपरेंड. ठीक है. सो कंट्रोल यूनिट में सिर्फ ऑपकोड जाता है, ऑपरेंड नहीं जाता. सर वॉइस ब्रेक. सर नेटवर्क कनेक्शन गिर से आवाज नहीं आया. अरे यार ये नेटवर्क, एक मिनट में जरा स्विच मार के देखता हूँ. आई जस्ट ट्राई माय लास्ट ऑप्शन. Am I audible now? Yes, sir. वो ये एक चक्कर होता है उसको समझना पड़ेगा. Let me check my speed. Something going wrong. अच्छा खासा स्पीड है यार, 50 mbps है. ठीक ठाक है वीडियो के लिए. I don't know what is going wrong. अपलोड भी ठीक ठाक है. I don't know what is wrong. It may be wrong with the website also. It may happen. Acha, let it be. What I was talking. हाँ, this one. Control ऑपकोड एंड ऑपरेंड. yeah, and ऑपरेंड नहीं जाता. ठीक है. So that's why if you see over here, यहाँ पे दो लाइन है, एक अंदर जाएगा और एक ऐसे इधर बाहर से ही जाएगा. ये मतलब मैंने से मूव x, 1 2 3 4 तो मूव x का जो भी कोड है इधर गया. ये अंडरस्टूड कि नेक्स्ट जो भी दो बाइट है दे आर फॉर डेटा. ठीक है. इट विल जस्ट मेक द डेटा टू गो इन एज मतलब x यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये लाइन पे छोड़ देगा, ये लाइन इधर डाल देंगे. ठीक है. सो इट वोंट गो इन कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट में जस्ट ऑपकोड जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. So that is what control unit will be used for. Then we are having ALU. Now what is the function of ALU? Come on fast. Addition, subtraction. Perfect. That ALU stands for arithmetic and logical. So it performs some arithmetic and the logical operations. Arithmetic, addition, subtraction, multiplication, division, logical and or XOR वगैरह जो भी है. Getting and after performing that operation, now देखो ALU कैसे. Do you know why that ALU is shown like this one? Why not in box? बाकी जो भी जितना दिख रहा है मतलब एवरीथिंग इज इन बॉक्स बट ALU इज नॉट इन बॉक्स. क्योंकि वो मेमोरी नहीं है, वो स्टोर नहीं करेगा कुछ चीज. नहीं
Okay, guys. Because inputs, yes. 2 inputs, Sorry. क्योंकि 2 input लेगा ना अगर लॉजिक Acha, let me just say first. This symbol actually indicates it is doing some arithmetic operation. अपना वो epsilon रहता है ना और summation का sign, epsilon नहीं summation का, ठीक है? उससे ये derive किया है का symbols to just indicate this is not a normal box. This is actually going to do some arithmetic operations. ठीक है? And इसको 2 input रहेंगे और इधर से एक output रहेगा. ठीक है? So it take 2 data mostly. एक डेटा के ऊपर भी काम होता है, ऐसे नहीं कि 2 डाटा, बट एडिशन रहेगा तो 2 डाटा आएंगे, मल्टीप्लिकेशन का 2 डाटा, लाइकवाइज. ठीक है? इट विल प्रोसेस ऑन दैट एंड वी जस्ट प्लेस द रिजल्ट बैक ऑन दिस लाइन, और ये लाइन से जिधर जो रजिस्टर में जाने जाते हैं. ठीक है? एंड एट द सेम टाइम ALU will update flag register as well, operand and flags. ठीक है? It will just update that operand and flag. So ALU is a 16 bit. Is actually used to operate on a 16 bit of data. It can do operation like arithmetic and logical operations. ठीक है? And after the doing that operation, it will just place result back to the particular registers, and at the same time it will just affect this flag register. Okay? And we are having this operand also. Operand एक register which is of 16 bit, which is actually used for temporary storage. Do you know the use of operand? Anyone knows with this one? Operand का use क्या होता है? Anyone? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए. ठीक है? बट टेम्परेरी स्टोरेज कब यूज करता है, कौन से इंस्ट्रक्शन में, किधर, क्या? इज इट अवेलेबल टू द यूजर फॉर प्रोग्रामिंग ऑपरेंड वाला चीज? से मतलब Is it available to the user for programming this operand part? ये वाला No, operand. sir. Yeah, operand is actually 16 bit का register, which is available only to the ALU, not to the any other, not to the user, not to the any instruction. ठीक है? And ALU का काम क्या है? At the same time it will just update the flag register. Now do you know the flag register? yes ठीक है? अब मैं flag register Yes. फटाफट explain कर देता हूँ and we will just finish over here. flag register है किधर? यार उसका स्लाइड था मेरे पास. ठीक है, let me just search on Google. It's very simple actually. If you are from a diploma, so I need not to explain it in detail. If you know, then otherwise I will go in detail. If you do not have any idea, yeah. इसे zoom कैसे करते हैं इसको? किधर बस करते हैं मेरा. Come on, hurry up. अच्छा, is this visible to you? yes sir. No? हाँ तो blur है ज़्यादा. इधर इमेज लोड होते टाइम लेगा, किधर है मेरे को भी पता नहीं. हाँ, ओके. नाउ इज दिस विजिबल? एरो से समझ रहा है. अच्छा, ये समझ रहे हैं ना, मतलब क्या yes लिखा sir, है? ठीक है तो फाइन. ठीक है, फटाफट खत्म करेंगे. सो दिस 16 बिट का रजिस्टर, आई होप यू नो. फटाफट में रिवाइज करता है. इफ यू फील कि नहीं पता है तो बोलो मुझे. ठीक है? फ्लैग रजिस्टर इन 8086. सो वी आर हैविंग अ कैरी फ्लैग. व्हाट इज द यूज? बोलो फटाफट. देन आई विल अंडरस्टैंड डू यू नो और नॉट. MSB में अगर कैरी रहेगा जनरेट हुआ तो फिर कैरी फ्लैग 1 सेट MSB होता के है. आगे. Everyone knows the anyone like I do not know the flag register. Please just tell me. I will go in detail. If anyone of you do not know, doesn't know this flag register, I'm just going थोड़ा ऊपर से. If you do not know, I will go in detail. Anyone like sir, I do not know. Please go in detail. सबको पता है? Nimish, do you know the flag register? यस सर. सर वो बीच में एक बिट मिसिंग क्यों था वो याद नहीं. ठीक है. यशा, do you know? No, sir. You don't know flag register? Hello? Yes, sir. Do you know or not? No, sir, I don't know.
ओके ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर इज व्हाट, एज आई टोल्ड, ALU is going to update. If you see the architecture, this is going to be updated by the ALU. Means what is the flag register means, what it will just tell the status of the answer, ठीक है। It will just give the मतलब how the answer looking, मतलब how the answer look like, ठीक है। It won't give the actual answer, but answer का एक बोल देता मतलब हाँ किस टाइप का आंसर मिला है मुझे, ठीक है। So for that we'll be using a flag register. Ready? अब कैसा, let's see. Yeah, this is a carry flag. Now whenever we do the addition, and in the addition if there is a carry, now keep in mind this flag register is of 16 bit, and here all the bits are represented over here. मतलब इस 16 bit मतलब पूरा इस each and every bit क्या है वो बोल रहा है इधर, ठीक है। and when I say each and every bit मतलब what, उसका value will be either 0 or 1, मतलब वो set हो सकता है otherwise reset. Ready? If I say 1 मतलब set, 0 मतलब reset. Try to understand. Flag register is of 16 bit, and this is what the 16 bits are. Here, this is what the 16 bits are. ठीक है। And now, okay, now it's comfortably visible, I think. This is also 16 bit, ठीक है। And now this is what each and every bit I'm just talking. So when I say the bit means what, it will be directly 0 or 1. एक तो 0 रहेगा तो 1 रहेगा, because if I talk about a single bit, and 1 मतलब set, 0 मतलब reset, ठीक है। अब क्या होता है फ्लैग रजिस्टर में, now is a carry flag. Whenever there is an addition or something, subtraction or something like that, and whenever that carry generate, so it will be 1, otherwise 0. तो ये बोलता है कि हाँ आपके आंसर में कैरी जनरेट हुआ कि नहीं। एज और फ्लैग का काम के आंसर का स्टेटस बताने का, आंसर का जस्ट आइडिया बता, मतलब किस टाइप का आंसर मिला है, गेटिंग इट, ठीक है। देन हियर वी आर हैविंग, देन देयर इज अ डोंट केयर. डोंट केयर मींस व्हाट, दिस बिट वी विल नॉट, एक्स मींस व्हाट, डोंट केयर. डोंट केयर मींस व्हाट, इफ इट इज 0 or 1 आई डू नॉट केयर, मतलब इट डजंट कैरी एनी इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट डोंट केयर इज, ठीक है। देन वी आर हैविंग अ पैरिटी फ्लैग. पैरिटी फ्लैग इज व्हाट, इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ 1 इन द आंसर. नंबर ऑफ 1 इवन है कि ऑड है, ठीक है। नंबर ऑफ 1 अगर इवन रहेंगे तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा, ऑड रहेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देन देयर इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग? एनीवन? सर अगर कैरी four- जनरेट हुआ है फोर्थ निबल. Yeah, very good, ठीक है। So whenever there is a carry from a lower nibble to higher nibble, this carry is a different, this carry is a different, ठीक है। This is a carry flag, this is an auxiliary carry. Here whenever the carry going from MSB onwards, ठीक है, here when it is going from lower nibble to the higher nibble or lower byte to the higher byte in a 16 bit additions or 16 bit operations, ठीक है, then only it will get set, otherwise reset. Then we are having a zero flag. Zero flag is what, when the answer is a 0. Let's suppose if I do 3 minus 3, answer is going to be 0, right? So in that case this zero flag will be 1. When the answer is 0, this zero flag is going to be 1. Try to understand. ऐसा मत बोलो कि आंसर 0 है तो ये भी 0, ऐसा नहीं है. If it is answer 0, this will be the 1 indicating answer 0 आया, ठीक है। Then this was a sign flag, which is actually for what for indicating sign in a sign operation. Answer तेरा positive है कि negative. If it is a negative, this will be 1. If it is a positive, this will be the 0. Okay. Then here we are having these three as a control flag, because this flag register which is of 16 bit, it divided into two part. Here you can see 6 are status and 3 are control. ठीक है। So जो भी black में जो भी रेड में दे आर दी स्टेटस फ्लैग, एंड जो भी ब्लैक में वो कंट्रोल फ्लैग है, ठीक है। अब ये कंट्रोल क्या होता है, नाउ इट्स अ ट्रैप फ्लैग. अब ये ट्रैप फ्लैग क्या होता है, इट इज एक्चुअली यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. मतलब प्रोग्राम सिंगल स्टेप में एग्जीक्यूट करना है कि पूरा एक साथ करना है. अपन ने वो देखा था ना एग्जीक्यूट करते वक्त, सिंगल स्टेप एंड एक साथ पूरा, ठीक है। सो व्हेनेवर वी एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेप मतलब क्या, ट्रैप फ्लैग वन होता है, तो एक एक इंस्ट्रक्शन का आउटपुट बताएगा, ठीक है। एंड वेदर ट्रैप फ्लैग इज 0 तो पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्टली आंसर बताएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू डू नॉट, इफ यू फील लाइक नहीं समझ रहे तो बोलो, आई विल गो इन डिटेल, ठीक है। देन वी आर हैविंग इंटरप्ट फ्लैग. हां बोल सर. वो ऑक्सिलरी फ्लैग वो लोअर निबल के लिए रहता है या लोअर बाइट के लिए रहता है? keep in mind, if you are doing 8 bit का ऑपरेशन तो लोअर निबल टू हायर निबल, and if you are doing a 16 bit का ऑपरेशन तो लोअर बाइट टू हायर बाइट. समझो? Getting? Okay, yeah. Now this interrupt flag. Now interrupt flag is for what? If you want to enable or disable interrupt. अगर interrupt flag 1 है तो interrupt enable है, interrupt flag 0 है, interrupt disable है, ठीक है. Then the direction flag. ये direction flag actually direction देता है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, मतलब subsequent लोकेशन पे जाना है कि पीछे लोकेशन पे जाना है, ठीक है. मतलब let's suppose if you are at 2000 लोकेशन, sorry 2100 लोकेशन, let's suppose 21000, then उसके बाद 210001 पे जाना है कि 20099 पे जाना है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, मतलब आगे जाना है कि पीछे जाना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है. इफ डायरेक्शन फ्लैग इज अ 0 देन
आगे जाएगा, मतलब वो जो अपना ऑफसेट एड्रेस है SI and DI, they will get increment. If direction flag is 1, they will get decrement. Because मतलब ऑफसेट एड्रेस से मतलब ऑफसेट एड्रेस will only tell ना मतलब कहाँ पे जाने का, आगे जाने के पीछे जाने, ठीक है. That will be dependent on the direction flag. If the direction flag is 1, so it will get decremented SI and DI, and if direction flag is 0, it will increment SI and DI. ठीक है. And here we are having overflow flag, which is actually used to indicate overflow in any operation. मतलब अगर आंसर ओवरफ्लो होता है तो ये 1 होता है, अगर आंसर ओवरफ्लो नहीं हो ये 0 होता है. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड फ्लैग रजिस्टर? पक्का अगर कुछ डाउट रहेगा तो बोलो, मैं डिटेल में जाएगा कौन सा भी एक फ्लैग, इफ यू डू नॉट नो बोलो. सर ये सर सर डायरेक्शन फ्लैग. हाँ हाँ चलो ठीक है. डायरेक्शन सर फ्लैग ये सर ये कौन से मतलब मेमोरी के लिए यूज होता है ना, मेमोरी में ऊपर नीचे जाने के लिए. कैसे बताइए? यस यस आई विल टेल यू. अरे पेज इंसर्ट कर दो. चलो डायरेक्शन फ्लैग क्या होता है? कौन सा भी फ्लैग अगर नहीं समझे तो बोलो, मैं उसके डिटेल में जाएगा. बिकॉज़ आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि once again your diploma people you just understand actually the flag, because flag इतना बड़ी चीज नहीं है, फंडा नहीं है बहुत कुछ ज्यादा. ठीक है. जैसे मुझे मेमोरी है, समझो अभी. ठीक है. यहाँ पे मैंने कितने तो DS है और ES है, डेटा सेगमेंट है. डेटा सेगमेंट जैसे वो स्टार्ट हो रहा है 30,000 से, 30,000. ठीक है. एंड यहाँ पे कितने तो लोकेशन है 30,125, समझो ये लोकेशन में किधर में पॉइंट कर रहा हूँ. ठीक है. ये मेरा कौन सा सेगमेंट है? डेटा सेगमेंट है. ठीक है. अभी डायरेक्शन फ्लैग का काम क्या है? डायरेक्शन फ्लैग इज जस्ट वर्क विद द डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट. इन दोनों के साथ ही काम करता है. अब इसका काम क्या है? डायरेक्शन देने का. मतलब कैसा पता है? जस्ट लाइक दिस. नाउ लेट्स सपोज इफ यू आर एट दिस लोकेशन, इफ माय डायरेक्शन फ्लैग इज 0, if my direction flag is 0, okay, then afterward from this 30125 it will go to the 30126, then 30127, likewise it will keep on incrementing. Okay, but if my direction flag is 1, it will decrement, so it will make it 1 to 4, 1 to 3, likewise. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. so that is what our direction flag is. मतलब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, मतलब इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, that will be decided by the direction flag. सेगमेंट में मूव किधर करना है, ऊपर के नीचे. ठीक है. so that's why it's called the direction flag. Understood? so when it is 0, it will increment in a DS and ES में किसको इंक्रीमेंट करता है? DS कौन एक्सेस करता है? दो रजिस्टर DS एंड SI, तो वो SI को इंक्रीमेंट करेगा, बिकॉज ये जो बेस एड्रेस रहता है वो कभी फिक्स ही रहता है, कहां से चालू होता है. ठीक है. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसको करना रहता है? सिर्फ SI को. लाइकवाइज इन एक्स्ट्रा सेगमेंट विल बी एक्सेसिंग बाय यूजिंग टू थिंग, दैट ES एंड DI. तो DI को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करेगा. सो बेसिकली DI फ्लैग हैंडल्स SI एंड DI. ठीक है. अगर DF फ्लैग मेरा 0 है, ये दोनों भी इंक्रीमेंट होंगे. DF फ्लैग मेरा 1 है, ये दोनों में डिक्रीमेंट होंगे. अंडरस्टूड? ओके. यस सर. ओके. अच्छा, एनी अदर फ्लैग यू वांट मी टू एक्सप्लेन? सर हेलो हाँ बोलो. सर ट्रैप फ्लैग. अच्छा, ट्रैप फ्लैग क्या चीज है? Yes, yes, sir. हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो? सर ट्रैप फ्लैग. ओके ठीक है. ट्रैप फ्लैग अभी चीज क्या समझो. ट्रैप फ्लैग इज एक्चुअली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. कैसे? एज आई टोल्ड कि मतलब लेट्स सपोज दिस इज द इंस्ट्रक्शन मूव AX, 1000. ठीक है. मूव BX, 2000, then add AX, BX and then halt. There have try to understand ये होता क्या. ठीक है. Now let's suppose if my trap flag is equal to 0, what will happen? Excuse me. Keep in mind this trap flag, direction flag and intra flag, these are the control flag. ये कुछ आंसर का स्टेटस वगैरह नहीं देते. स्टेटस के लिए अलग ही अपने पास 0 फ्लैग वगैरह सब. ठीक है. दे आर एक्चुअली यूज्ड टू कंट्रोल. जैसे अपन देखा डायरेक्शन फ्लैग कंट्रोल करता है कि डायरेक्शन किधर जाने का. इंटर फ्लैग कंट्रोल करता है कि मतलब इंटर को अलाउ करना है कि नहीं. लाइकवाइज ट्रैप फ्लैग भी कंट्रोल करता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन. हाउ? इट्स जस्ट सिंपल. नाउ लेट्स सपोज इफ माय ट्रैप फ्लैग इज इक्वल टू 0, means what? It will just execute the program entirely and it will directly give the answer. Means what? It will just directly give 1000 plus 2000, that is a 3000. So indirectly you will see that in AX we are having a 3000. ठीक है. But if the trap flag is equal to 1, अगर 1 है तो वो क्या करेगा दिखा, मतलब it will just execute each and every instruction. That is called the step by step execution. ठीक है. It will just show AX में 1000 गया, then we show BX में now you are having 2000. now we are adding, that's why AX में I will be having a 3000 and उसके बाद halt करो. So that is the difference in when the trap flag is 0 and trap flag is 1. So once again, when the trap flag is 1, it will just execute entire program directly बोलेगा AX में 3000.
ठीक है. But if my trap flag is equal to 1 means what, I want to execute program in single step. तो एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करेगा. मूव x, 1000 तो x में दिखाएगा हाँ 1000 गया, then bx में 2000 गया, then ax में after the addition answer is 3000. Are you getting it? Understood? Yes, sir. Okay. Any other Sir. doubt? हाँ बोल. सर जब ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है तब कैरी फ्लैग भी सेट होता रहेगा ना, क्योंकि दोनों में भी वही हो रहा है. मींस नहीं ओवरफ्लो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग का फंडा बहुत अलग है यार. एक्चुअली क्योंकि ओवरफ्लो फ्लैग हाँ कैरी जनरेट हुआ मींस वो ज्यादा हो गया ना 8 बिट से. हाँ वो तो है, बट ओवरफ्लो फ्लैग डिफरेंट है. ओवरफ्लो फ्लैग एक्चुअली साइंड ऑपरेशन में बोलते हैं, साइंड ऑपरेशन में ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं. अंडरस्टूड. साइन मींस साइन मीन प्लस माइनस ऑपरेशंस में, मतलब व्हेन यू डू दैट प्लस 32 प्लस माइनस 23. समझ में आ रहा है. ओवरफ्लो फ्लैग एक्चुअली एक है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो लोगों को पता ही नहीं रहता क्या होता है. ठीक है. जस्ट लेट मी जस्ट टेल यू इन शॉर्ट. लेट्स सी फटाफट ओवरफ्लो फ्लैग होता कब है. ये भारी चीज है एक्चुअल में. एक किधर है पेज यार. लेट्स सी. ओवरफ्लो एंड कैरी फ्लैग अलग है, समझो ऐसे अलग है. क्या बोलूं. Yeah, let's see. Now let's suppose if I do like this one, 24 plus 82, ऐसा मैंने किया. ठीक है. हेलो. नेटवर्क इशू. Am I audible? Yes sir. यार Yes. क्या अभी लाइट गया. मैं आई एम जस्ट ज्वाइनिंग फ्रॉम मोबाइल. एक मिनट. अबे यार मुझे काम करना था. I want to download the attendance, but कहाँ से करूँगा. And one more thing, who started the recording for you? Every time you will remind me to download the attendance, हाँ, because मैं भूलता हूँ यार. As I told, मुझे भूलने को होता है सब कुछ. ठीक है. अच्छा, do one thing guys. Overflow flag ना आप खुद सर्च करो. लेकिन overflow flag का यूज क्या है. ठीक है. Just hint, it is actually used in sign operation only. It is used only in a sign operation. Getting? So two tasks मैंने पहले भी एक task दिया था. Why IP is in BIU. That is one task for today. And another task is that what is the use of overflow flag. So these are the two which you have to sort it out, or you have to search for next lecture. Getting it? Will you do this much? Okay sir. Okay, ठीक है. तो ये Yes, करो. sir. आपकी टाइम भी खत्म होने वाला है. Who started the recording? I forgot. Name? Yes, sir. What's your name? Sir, Saima. Taima. Yeah. Next time you will remind me to download the attendance as well. Okay, sir. Okay, ठीक है. So for the time being, I'm just ending the meeting. यार मैंने पूरा 2 घंटा ले लिया. मतलब normally I do not take. But have you understood, guys? Actually, the architecture of 886. Yes, sir. Okay, because actually it really take me 2 hours से भी ज़्यादा actually for explain the entire architecture. But ठीक है. I hope I have just made a point कि you understand each and every block and actual में सब कैसे चलता है MUP के अंदर. ठीक है. So let me just end this meeting over here. See you in the next lecture, and next lecture से